Hello, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to this session on ethics and professional skills module from our 6 Digits program. Okay, today's session, I think हम अभी बस 5 minute के अंदर we'll take a namaz break, and then when we come back, we will start discussing our ethics and professional skills module today. Just one question before you leave for your prayer break. How was your last unmoderated session on Friday? How did that go? You may just type in the answer in the questions box. Excellent. Okay. I'm sure, Kwab, you're ready because you're happy because you got your membership certificate already. So आपके खुश होने की वजह ये भी हो सकती है. Extremely good. All right. Umair, thank you for confirming. By the way, Kwab को उनका ACCA का certificate मिल गया है. So everybody may congratulate him. Okay, excellent. Okay, brilliant. So today we are going to sorry, somebody is continuously closing my webcam. So Hassan, Nizam, leave my webcam on for a little bit, and then when I go back, I'll switch it off. All right. So very quickly, आज का जो हमारा सेशन होगा वो that is going to be ethics and professional skills module. जब मैंने आप लोगों को ये अनाउंसमेंट की थी regarding this ethics and professional skills module, so most of you said कि ये सिर्फ 2 sessions में कैसे complete होगा, you might need more time. So our trainer Hassan Ashraf, who's an ACCA member, we've had a conversation with him, and we've agreed that we will see the way it goes. The purpose is not to take you through the nitty-gritties of each and every unit. We will talk about the importance of each of these, the application of each of these units, and कुछ ऐसे units हैं जिनको हम ज़्यादा highlight करेंगे, ज़्यादा discussion करेंगे उनके ऊपर. So for example, data analytics का एक unit है, उसके ऊपर हम ज़्यादा emphasize करेंगे. So that's what the plan is. I'm sure आप लोग इसको enjoy करेंगे. But ज़्यादा important ये है कि इसकी learnings को आपने apply करना है in your actual life once again. Very quickly, अगर हम 3-4 sentences में summarize करना चाहें अभी तक जो हमने learn किया है from the sessions with Sajid, तो let me get help from some of the participants also. So I will request people to raise hands. और मैं अनम्यूट करूंगा और उसके बाद सिर्फ 3 या 4 sentences में summarize करना है what have we done, okay, so that everybody in the group, including Hassan, who's going to take us through the ethics and professional skills module, he's up to speed as well कि हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है और हम अपने mindset में किस level पे पहुंच चुके हैं अभी तक. So Hassan, for your information also, हम अक्सर ये डिस्कशन करते हैं कि हमने अब अच्छी तरह इन तमाम जहनों को प्लाव कर लिया हुआ है, अब सीड्स सो हो रहे हैं और एक वक्त आएगा जब हम इस क्रॉप को रीप करेंगे इंशाल्लाह. So raise hands, please. Raise hand. And I'm going to hand over to some individuals who are going to tell us कि क्या-क्या अभी तक हमने सजीद के साथ जो सेशंस रन हुए हैं उसमें क्या-क्या सीखा है, क्या-क्या समझा है और क्या अप्लाई करेंगे. Hera, is it all right if I ask you to speak? I want to see hand raises, please. All right, Hassan का hand raise हुआ हुआ है, Hassan Saleh का. Hassan, you are unmuted. Please unmute yourself and go on, but please be very, very precise. Okay, जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much. Okay. अस्सलाम वालेकुम.
मैं अगर समराइज करना चाहूँ इस सारे एक्सपीरियंस को जो पिछले कुछ महीने से हफ्तों से हुआ है, मैं कहूँगा कि हम लोग जो है ना, हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल सा एक बैरियर अपने ऊपर रखा हुआ था कि हम लोग ज़्यादा आगे सोच नहीं रहे थे। तो हुआ ये कि इस एक्सरसाइज से कि हमने जब देखा, अपने गोल्स वगैरह को एनालाइज किया और बाकी के गोल्स को देखा, तो हमारे अंदर एक तरह से दोबारा से जो है ना वो एक, ये कहना चाहिए कि स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है कि हम लोग अब आगे ज़्यादा दूर का सोचें और ज़्यादा ऊंचा सोचें और उसके हिसाब से अपने गोल सेट करें। थैंक यू। Very, very nice. Excellent. Thank you very much, Hassan. Very encouraging, very motivating. And I am sure this spirit you had, this should continue throughout the session and even afterwards. चलिए अब ऐसे करते हैं, एक एक कोई और साहब अगर इसमें ऐड करना चाहें, आई प्रेफर अ फीमेल so that we have an equal representation from the session, and then we'll go for नमाज break. और कल से हम ये करेंगे जी कि नमाज ब्रेक जो है, सॉरी आई मीन वेडनेसडे से, कि नमाज ब्रेक हम शुरू में ले लिया करेंगे, बिकॉज कराची में अब 6:58 पे अजान हो जाती है। तो 7 to 7:10 हम नमाज ब्रेक ले लिया करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 7:10 पे सेशन स्टार्ट कर दें जी। तो फ्रॉम आवर फीमेल ऑडियंस, हु इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड? Nobody? Come on. Very big audience, come on. जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक कोई हैंड रेजेस नजर नहीं आ रहे हैं। So what I'm going to do is I'm going to pick somebody. Maria Sheikh. Maria, are you ready to speak? If I, all right, unmute you. You're unmuted. You can unmute yourself and speak. Maria Sheikh, there Assalamu you alaikum, go. everyone. Assalamu sir. Assalamu Can alaikum you ji, hear me? assalamu alaikum. Yes, loud Ji, and sir, I clear. just got up right now after namaz. Can you please let me know what's going on and what I have to speak for? We're just summarizing. We're just summarizing in terms of experiences. कि हमने जो सजीद के साथ सेशंस रन किए हैं, उसके बाद आप लोगों की क्या फीलिंग है और कैसी लर्निंग? दे आर वेरी वेरी ब्रीफली 1 or 2 sentences. Yeah. Sir, so far, it's really great to be a part of this program. Just not amazing how Sajid sir explained every bit of it, but like the takeaways, different videos, the learning, to be grouped up with these amazing people, sharing views, their ideas, the learning pattern, the thinking pattern, and obviously a great going. This is literally ACCA Pakistan great efforts and getting us along. And inshallah, we'll be taking more interest and in the upcoming sessions. And I would like to say that I would also prefer that if someone comes up with job-related business canvas models, also if this needs to be discussed ahead. And it's really great. Thank you very much. And we need to be Excellent, much excellent. having Thank like. you so much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, Maria. I think these are some encouraging comments, and I'm sure the feeling will be likewise across the group. So अब हम ऐसे करते हैं कि हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, and then the time by my watch is 7:18. 7:28 is when we come back, and we will resume with our session. And once again, I'll make the announcement. वेडनेसडे से हम लोग शुरू में ही नमाज ब्रेक ले लेंगे और हम स्टार्ट ही 7:10 पे करेंगे, ठीक है? टिल द टाइम नमाज का टाइम को 6:50 पे पहुंच जाता है। चलिए, ऑलराइट, सो ऑफ टू आवर प्रेयर ब्रेक एंड देन वी कम बैक।
All right, thank you very much. Put my headphones on. I hope most of you are back, and let's kick off the session. But before kicking off, let me introduce your trainer, your master trainer for EPSM module to you. Hassan Ashraf is a part of the ACCA team. Hassan, how long has it been since you joined ACCA? Was it 2012, 13, or what? Yeah, it's 7 years and 10 days. Exactly. 7 years and 10 days, 2013, exactly. So Right. Hassan was based out of Multan, and initially he was looking after Multan, Bahawalpur, Rahim Yar Khan, Sahiwal, all these cities. And I've had the pleasure of traveling a lot with Hassan across the southern belt of Pakistan. In fact, मुझे हमारी बड़ी अच्छी memories हैं. We were traveling to, what was that place? Goat Machi at the Fauji Yes, fertilizer plant. Was it Fauji unforgettable. fertilizer or some other? Sorry? Unforgettable memories. Yes, it was Fauji fertilizer. Fauji fertilizer plant. And we never traveled, at least I had not traveled that far in Punjab. So हम रात के 2:30 बजे we reached Goat Machi, and then वहाँ पर हमारा जो गोट माची में फौजी फर्टिलाइजर का प्लांट है वहाँ पर हमारा एक सेशन डिलीवर होना था to the students of National Grammar School, which was a school within uh, the, the the officers colony. तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली हमें इनवाइट किया हुआ था. So I think fantastic travel, fantastic journey. वापस पे आते हुए हमने वो शुगर केन फैक्ट्रीज जो सारी जिनका आजकल बहुत खुलेआम तस्करा होता है वो सब देखी. उनके बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलीज की लाइंस देखी of how people are queued up to sell their sugarcane crop. So very interesting experience. So khair, Hassan ke saath, it goes back to 2013, 14. Done a lot of work. Then Hassan Ashraf was selected as the education manager for Central for the northern region, and right now जो हम पाकिस्तान को साउथ और नॉर्थ में स्प्लिट करते हैं, so Hassan looks after the education affairs for the central region, which means, Hassan, correct me if I'm wrong, which starts from Sargodha, Jhelum and goes up to once again the south of Pakistan. Is that correct, Hassan? Yeah. Yes, that is correct. Okay, but more importantly, Hassan is an ACCA member, and he has had experience of teaching ACCA subjects as well at renowned institutions in the past. So over to Hassan, and I shall now be a silent spectator. Hassan, over to you, please. You may switch on your camera so that people may be able to see you as well. Sure. Thank you very much, Harun Saab. I hope I have. Yeah, this is. Yeah, so I hope I'm visible. Yes, Hassan, perfectly visible. Okay. So, welcome to all of you. Good evening, late evening, I would say. It's a pleasure to be once again here with this very esteemed group who are aspirants, I would say, who are people that can look beyond the horizon, that have the ability to look beyond the horizon. And I was very pleased to hear the remarks from one of the attendees, Hassan Soleh, probably his name was, that, whatever you guys have learned so far, he really summarized it well. That, it's all about breaking that mental barrier. So, long ago somebody said that a man is only limited by the imagination he keeps, and by man I mean women and man both. So a human is only limited by the imagination that human keeps.
So sky is the limit. We are endowed with great potential by the one Almighty, and we are here to make great things. It's just that sometimes we lose our way somewhere on the journey. It's sometimes that we blame destiny, that our destiny was not good. And this is going to be, by the way, one of the area I would really like to touch upon, because मैं बहुत सुनता हूँ, अभी मैं अपना आपको तारुफ भी करवाऊंगा. So in large, in more than a decade, decade and a half, I have been working, और मैंने बहुत सारा ये सुना है लोगों से, people who are in their 40s, people who are in their 50s, people who are in their 70s, uh, and people even who are in their mid 20s, late 20s. They talk about हमारी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, ब्रॉट अप नहीं था, हमारे पास उस तरह की स्कूलिंग नहीं थी, हमारे पास उस तरह का कॉलेज नहीं था, and we were not privileged in that particular sense or this particular sense, and this is what was the obstacle for us to be successful in life. So I'll touch upon all these elements, that this is just an excuse that everybody tries to find, even if it is me or anybody else at different stages of our life. Um Now, coming to the topic, obviously, this is very important, something very close to my heart, something I really believe in. Uh, ACC has done a great job in developing this program. Previously, it was also part of the journey towards ACCA membership. However, this time, for last 2 years, this has become I would say, a cornerstone of ACCA's offering. In addition to regular ACCA students, a lot of professionals across the globe complete this program. A lot of corporations are buying this module standalone for their staff development. So this is not something normal step for an ACCA future member to become a member eventually. This is something far, far beyond that. And you can see the picture I have displayed on the title slide, something like pole vaulting as we see in the Olympics. So ये help करेगा आपको module to take this leap of progress. एंड आई विल शेयर विद यू कि वो प्रोग्रेस जो है वो किस तरह जो है वो आपको ये एनेबल करेगा, हेल्प करेगा. मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसकी, जिस तरह हारून साहब ने मेंशन किया. आई स्टिक टू मोर, जिस तरह एक आप समझ लें कि अगर आप में से किसी ने बुक लॉन्च कभी अटेंड किया हो लाइफ में, so the book launch is not only about why one should read that book, and not about the details of that book. I mean, a writer never tells you what is in detail in that book. He or she always tries to stresses upon, impresses upon the fact that this book is going to give you this book is going to be beneficial in this particular way, etc., etc. So my role would be exactly like the writer role is at a job launch. I will try to impress upon you, I'll try to emphasize this message, that why you guys should not only do this module, complete this module, but rather chew it slowly and digest it well. मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि बहुत से लोगों को पढ़ने का शौक होता है, किताबें, आप टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी गैजेट्स पे, टैब्स के ऊपर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं. But there are very few who really are able to chew that information and digest it well, so that it become part of your life, your body. So जिस तरह हम अपनी अगर फूड की बात करें, तो मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि the more we chew our food well, the more it will be digested properly, and the more it will become part of our body, and it will give us more nutritional value as compared to if we even swallow it and take it down our throat. It will create two challenges. One is that our digestion will be a complicated mess for us. We won't be able to sleep, we will be having a lot of issues. And on the other side, the food that we have eaten or swallowed down, or down on our throat, will never be able to give you that kind of nutrition to your body, because it has not been digested properly, it has not been able to become part of your body.
In the very same way, in this information age, there is a lot of information overload that we experience every now and then. You know, everybody wants to talk about so many things. Everybody is listing so many things out on various issues. But important is, you know, you should take as much as you are able to chew it properly and digest it properly. It is only then going to be beneficial. So a very prominent figure once said that it is not important how many books you read in your life, but it is important that whatever you have read in those books, if a situation in life comes where you have to decide, so the teachings, the learnings that you had from that book, you would be able to recall it and apply in that situation. So the book reading or the information reading will not be of any use if you are not able to apply them in your daily life, when you have to make difficult decision, when you need to manage dilemmas, etc. So therefore, this module, I will make sure that you chew it properly, you attend it properly, you complete it properly. So my job will be to ignite that flame in you, which would push you to complete this module. Although I know majority all of the attendees on this call today are members, and they have completed professional ethics module, which was previously a requirement, and they no longer need to complete this module to become a member. But as I said, I will tell you how this will or this is going to help you in taking this leap of progress. Moving forward, my quick introduction. I'm thankful to Harun Saab, who's been like a mentor, like a manager, you know, to me in all these 7.5 7 years. I've learned a great deal from him, and certainly those experiences of travel were great. और बाय द वे, बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, क्योंकि ये बात अब मेरे जहन में आ गई है कि सफर जरूर करें. सफर वसीला वसीला जफर कहा जाता है उर्दू में, लेकिन अमूमन ये ख्याल होता है कि सफ़र शुमाली इलाका जात का करें या किसी नॉर्थ फॉरेन कंट्री का करें जहाँ पे बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी हो, या जो भी आप पसंद करते हैं. सफ़र एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर डायरेक्शन में करना चाहिए. अब जिस सफ़र का अभी हम जिक्र कर रहे थे, शायद बहुतों के लिए वो बहुत प्लेजेंट नहीं होगा. रोड के ऊपर शुगर केन की ट्रॉलीज और रात का वक्त और एक बहुत ही अनफेमिलियर स्ट्रेंज एनवायरनमेंट, बट you learn a great deal. So this was just a passing thought for all of you कि अपने सफर की डायरेक्शन को सिर्फ एक ही तरह की सिमत में मत रखें कि आपने सिर्फ शुमाली इलाका जाना है या उन मुल्कों में जाना है जहाँ पे जो मशहूर हैं अपने टूरिज्म के लिए, बल्कि हर डायरेक्शन में सफर करें. सफर आपको बहुत कुछ जो है वो इल्म देगा. और इसी तरह से एक और बड़े फलसफी का कॉल है कि इल्म जो है वो घोड़े के पाँव से उठने वाली जो धूल है उससे पैदा होता है. सो सफ़र की बहुत इंपॉर्टेंस है. सफ़र ज़रूर करें, मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करें ताकि आपका होराइजन एक्सपैंड कर सके. हसन अशरफ, सीनियर मैनेजर एजुकेशन नॉर्थ. मैं फेलो मेंबर हूँ ACCA का. तकरीबन 14 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए. इन 14 सालों में मैंने रियल स्टेट डेवलपमेंट के साथ काम किया है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कुछ अर्सा काम किया है, एजुकेशन मैनेजमेंट मेरा फोटे है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, और इसी से रिलेटेड मैंने कुछ ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर भी काम किया पास्ट में. फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क डेवलपमेंट से. सेल्स के अंदर नेटवर्क कैसे डेवलप करते हैं आप. फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग की अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 3 साल की. उसके बाद फिर मैंने जो रोल अभी हारून साहब ने मेंशन किया मुल्तान रीजन का, वो पर्टिकुलरली इट वाज सेल्स इन द एजुकेशन मैनेजमेंट इंडस्ट्री. और उस पर फिर मुझे इत्तफाक हुआ to meet and engage with a number of stakeholders in public sector, private sector, education, regulators, etc. और कस्टमर सर्विसेज भी. सो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मैंने काम किया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इन 14 सालों के तजर्बे की रोशनी में जो कुछ मैंने सीखा है वेरी हम्बली वो मैं आप तक पहुंचाऊं. मैं पर्टिकुलरली 100% करेक्ट नहीं हूँगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं को मैथमेटिक्स का सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा. So feel free to share your opinions and share your thoughts if you somewhere disagrees with me.
that will be completely all right. एजेंडा की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आज घंटा डेढ़ 1 घंटा 15 मिनट अभी हैं, और इसी तरह से कोई तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे मेरे पास थर्सडे को होंगे इंशाल्लाह। तो मैंने बड़ा क्रिस्प रखा है एजेंडा। हम बात कर रहे होंगे व्हाट इज EPSM मॉड्यूल, very quickly I'll touch upon what this module is all about. Then why is it important? The most important question for this and for anything we do across the world, because uh, unless you do not appreciate, I'm switching off my video just because that my internet was not very good just a while ago, so I don't want to make any interruptions while I'm going to deliver this program, but I'll keep on switching on and off depending upon if my internet gets healthy during this session. So coming back, the Excuse question. me, sorry to intervene, Aslam. I can't see your screen at the moment. Are you sharing it? Yes, I am sharing it. Let me see. Okay, apologies. I think something bad happened. Let me know when you can. Yep. All right. Now it's fine. Okay, thank Thank you you. very much. Thank you. So as I was saying, why is the most important question? Why should I do it? Why would I be bothered to take up this module when there is no compulsion, when this isn't mandatory? I am already an ACCA member. What additional am I going to learn? So I'm going to tell you all about this, and this is going to be the focus of my conversation for next 2-3 hours today and on Thursday. Then I'll talk about what this module covers, its syllabus, although I have uploaded a handout for all of you on this handout section in this webinar. That is the syllabus of this EPSM module. I will encourage everyone to download that. Nizam Ali has also uploaded that onto the Google Drive, and he will be sharing the link with all of you as well. So do download it, go through it, and we will be discussing it on Thursday, the what it covers part, and it will be very good for you that you will be having this pre-understanding of the syllabus. And then I'll give you a few tasks as well today and going forward as well on Thursday. So this is the agenda. Now, before we move forward, I have few polls to run with you, just for my understanding, about the audience. So this is the first poll that I'm going to launch. I will request and encourage everybody to please share their views. So the poll is now live. Thank you very much. 12% voted, 15, 20% voted, 25, 29, 35, 39, 42. Thank you very much. Keep them coming in. 54, 61, 62, 67. That's nice. 70% have voted. Keep them coming, guys. I'll try to stop this when we are 90% done, just to have a holistic idea about our audience. 75%, thank you very much. 76, 77. All right, that's nice. 53 seconds have gone by. Please keep coming in. I'll be stopping it in within next few seconds. 79%, please. All others, I will encourage vote on this poll. 79% have voted. I will request another few seconds for everybody else to take part and vote on this. It's 80%. Thank you very much. 81%. Thank you. Thank you very much. Please take your mouse and press the right option so that I am able to know the audience about their knowledge about EPSM. Okay, 81%. It's still a good one. I'm now going to close this one in the interest of time. 83%. So 20.
I can, share this with you on screen as well, the results. So you can see 22% said yes, they have completed this new EPSM module. 13% are partway through it. 41% have not yet started, and 24% don't know about it at all. So this is is a sort of reflection that I wanted to have and I wanted to share with you. So my focus will be particularly 41 plus 24. So these 65 to 70% people who either haven't started this module or are not aware of it, they will be my focus. The rest of the almost 35% people, for them it is going to be a reassurance, a reiteration of a lot of messages and few new things as well, which I've included out of my experience. Now let's go to another poll. Let me hide this. Thank you very much for your participation. uh, Here you go. Now I'm going to launch the second poll. Please share your answers. So which of the following statement is correct? So let's the response coming in. Please select the option that you feel is all right, is the correct one. Thank you very much. 38%, 39%. Let them coming in. 35 seconds have gone by. 50% voted, 56% voted, 59, 61, 64, 67, 68, 69, 71, 76, 78. Thank you very much. A little bit more. 80%. Thank you very much. 81. Thank you very much. Another few seconds before I close the poll and share with you the results. 82% have voted. 83%. Thank you very much, everyone. Thank you very much. 84%. Thank you very much. Another few seconds before I close. Okay, I'm going to close this now in the interest of time. Let's see what the results have come so far. So 63% have given the right answer. EPSM does all of the above. 31% thinks that EPSM prepares professional for the modern workplace. They are also right. 1% think that EPSM complements exam preparation. They are also right. So the right answer was EPSM does all of the above. It supports students in their exams. It helps you in being employable. It helps you in your career growth. It helps you aligning yourself with the modern workplace. Something very important for today's audience, because obviously you are a member, most of you will be working somewhere or had been working in the past. So this is going to make you employable, and this is going to make your career growth enable for you. So thank you very much for your kind responses. Now let's move on. So the next one is, what is EPSM module? Very quickly, but before I move on, I would like to hear from you and stop here for a few minutes. Now I would like to hear from you either through the chat response, or somebody would like to unmute themselves and speak as well. So my question to all of you is that if you have to define successful life, what is the one word that you would choose, or maybe two words, to describe a successful life for yourself? So I'm expecting your responses in the chat box. One or two words. How would you describe a successful life?
Please, guys, don't shy. Let the responses come in. I'm unable to see any response so far. Nizam, correct me if I'm wrong. I probably am unable to see the answers. Can you please unmute Nizam and tell me if I'm not able to see the answers? Or is that somebody hasn't typed it yet? No, we have many answers. They're appearing on your screen as well. Right. Okay, so now I can see them. Apologies, I think it was because of internet. That's why I switched my video off. Okay, right. So having power and money, okay, happiness, self-fulfillment, happiness, good career, fulfilling, freedom, excellent session. Thank you, devotion, congratulations. Okay, this is something the past I am reading from. Becoming best version of yourself. Okay, okay. So these are coming randomly, not in a linear fashion, I would say. Prosperity, peace, and satisfaction, right? Satisfaction, satisfied and living happily, self-awareness, okay, okay, right. So I have a couple of responses. Thank you very much for sharing these responses. Freedom, knowing oneself, satisfaction, a good lifestyle. So usually these are different answers that people come up with whenever this question is asked. And uh, this is very important because living a successful life is actually what we are here for. And success can be defined and measured in so many different ways. However, there are common timeless measures of defining your success. So one of them is सेटिस्फैक्शन, जिसको हम इत्मीनान कहते हैं. अगर आप इत्मीनान में हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं with whatever you have and you keep on striving for the best, so that is one measure, one timeless measure of you being a successful individual in your life. Obviously, happiness is something which is a collective feeling जो आपको मिलती है जब आप इन टोटलिटी आप आपके पास मीन्स टू लिव भी होते हैं, आप एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, आप प्रोग्रेस भी कर रहे होते हैं, आप लर्न भी कर रहे होते हैं. सो दैट्स वेयर हैप्पीनेस कम्स इन. Happiness is also about family, happiness is also about friends, happiness is also about feeling yourself that you are pursuing something, you have a passion to pursue, you have an idea to build upon, etc., etc. So this was just to have an idea that what my audience thinks, that how they are going to define a successful life for themselves. So very valid answers, I would say. I was not expecting anything different. Now, moving back, what is EPSM module? So as you can see, ethics and professional skills module is an essential part of the ACCA qualification and help increase your employability and workplace effectiveness. अब ये दो वर्ड्स हैं. एम्प्लॉयबिलिटी उस इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है जो जॉब सीकर है किसी भी स्टेज पे, चाहे वो अभी रिसेंट मेंबर बना है, चाहे उसे मेंबर बने कुछ अरसा हो गया है और वो जॉब स्विच करना चाह रहा है. दोनों केसेस के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज है वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस. ये एक ऐसी चीज है जो आपकी रिटायरमेंट तक खत्म नहीं होती है. बिकॉज अक्सर लोगों को ये लगता है कि जॉब, अच्छी जॉब, टू लैंड देमसेल्व्स इन अ गुड जॉब is the most important thing and this is the most difficult thing. However, contrary to the fact, in past 14 years what I have now realized is the to remain indispensable and to remain
you know, eligible for growth is one of the most difficult things. Employability is not that much challenging. So therefore ये मॉड्यूल दोनों चीजों को अफेक्ट जो है वो एड्रेस करता है, एम्प्लॉयबिलिटी को भी एड्रेस करता है और वर्क प्लेस इफेक्टिवनेस को भी एड्रेस करता है. So therefore all of you who are member, who have become member, it does not mean that you don't need this module, because workplace effectiveness is something that is going to be there for all of you in your life. Uh, Seems like we have lost Hassan sir's audio, so we'll wait for him. Yeah, so he's back. Sir, we lost your audio for a minute. जो आपके सामने, is it good now? Yeah, it's great. So last 1 minute, Is it better? if you could repeat that. Okay, sure. So what I was saying that, this module focuses on two important things. One is employability and the other is workplace effectiveness. Employability is something that you always need whenever you are going to land yourself in a new job. So staying employable is important in a competitive market like this that we have today. And workplace effectiveness is something which helps you in growing within an organization. So as I was saying, usually people believe that being employable and landing themselves in a good job in a good organization is a challenging and uphill task. However, on the contrary, I have now concluded that the most challenging task is to be able to grow within a good organization and see yourself standing at a strategic level in time to come. So therefore, this module is going to be of help for all of you, no matter whether you have completed the previous professional ethics module or not, no matter whether you are already employed at a good workplace or not, because this is going to help you improve your workplace effectiveness. These are 9 modules, and for all the current members, only 7 modules are accessible, and the rest of them are relevant for current students and affiliates who have not completed the previous ethics module. Some quick facts about EPSM. Usually ACCA on average has calculated that it takes you 20 hours to complete that. I'll come later to this time window. You can access this EPSM through my ACCA account. So all of you who were not aware of this ethics, professional and skills module, by now you will be having a fair idea what it is. It is a module comprising of 7 to 8 units, and it teaches you skills which will help you in being employable and at the same time being able to grow within the organization. It is fun, most definitely it is fun. It is very engaging. It is not like you would expect. There are simulations used in this tutorial, real scenarios, and you really enjoy. It really pushes your mind. The comment from Hassan Soleh, that it is all about pushing yourself, pushing your mind. So in this module, there are different exercises which asks you to push your mental barriers and go beyond them, which we usually call out of the box approach. So it is very engaging in that regard. And then this is the time to start your EPSM. Why? Because obviously you are now part of this group, and all of you are aspirants to achieve big, to achieve more, to go beyond the horizon. And that's why I believe that this is the right time for you to start EPSM. For all of you who have junior students in your circle, so since you are also seen as mentors, you are looked up to by those people who are in their ACCA journey
tell them that, you know, a recent research by ACCA suggests that there are 25% more chances for a student to pass strategic business leader and other strategic level paper if he or she complete this module before attempting those paper. So this is, a suggestion for you, because you also are mentors in your own capacities. Moving forward, why is it important? Okay, so why has always been important? Why should always be important? In the last 5,000 years of rationality, the history of rationality, and also from a very natural point of view, human beings are designed to think in rational ways. They always ask why, and that's the most important thing. You should never be a passive follower to anybody. You should always ask why. Why should I do it? Why am I compelled to do this? Why would I spend my time doing this? Why would I spend my money doing this? And this is something very common. In your daily life, you always talk about why. You go out for purchasing a mobile phone, you ask so many why. What are the features? Why should I buy this one, and why I shouldn't buy that one? You go to shopping in the malls, you buy apparel, there are so many whys. You take a lot of decisions from the early morning till the late evening, there are so many whys. So human beings are designed, programmed in a certain way to think about every situation, that why should I do this and why should I not do that. So let me tell you why you should be completing EPSM. Number one, this will help you to stand out. And I'm sure everyone would like to stand out. In life, if you want happiness, if you want lifestyle, if you want money, if you want authority, if you want whatever you feel will be good for you, you need to have this ability to stand out. Because at the moment, we are not living in a world where the population size is merely up to 50, 60 millions. In the past 50 or 60 years, we have seen a tremendous growth of humans on this planet Earth. And because of the advent of the information age, it is now a very competitive market. Previously, if you were based in America, it would be highly likely for you to land a job within American territory. These days and going forward, for any American job, for any United Kingdom job, and for any Pakistan job, you as a resident of that country are not the only one who will be competing for that job. And this is something simple, common sense. I'm not sharing any Newtonic ideas with you. The market is very competitive out there. If you want to become successful, if you want to achieve 6 digits, and if you want to go beyond 6 digits, definitely the only choice that you have is you should stand out. If you are not able to stand out, if you are the ordinary people, and if you are the ordinary person, then be ready to accept whatever is, available to an ordinary individual in this world. And we all know that what is there for an ordinary individual, no matter whatever the field, whatever the profession is. Either you are a educated individual, you are an uneducated individual, आप business में हैं, आप job में हैं, आप जिस भी चीज में हैं, तमाम वो लोग, तमाम वो businesses successful हैं जो stand out कर पाते हैं. जो नहीं कर पाते वो ordinary हैं. ये डायलेमा बहुत खतरनाक है कि आपका एक पाँव एक कश्ती में है जो कि ऑर्डिनरी है, और एट द सेम टाइम आपका थॉट, आपकी आपकी सेंस परसेप्शन एक बोट में है जो कि चाहती है कि उसको जिंदगी में सब कुछ मिले, तमाम वो चीजें मिलें जो कि वो ख्वाहिश करता है, जो वो ड्रीम करता है, जो वो एस्पायर करता है. ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं. तो इसलिए अगर आपको वो सब चाहिए जो आप ड्रीम करते हो और जिसके लिए आप इस ग्रुप का पार्ट हो, तो सबसे पहली चीज जो आपने अपनी मेंटालिटी में एम्बेड करनी है वो है स्टैंडिंग आउट. हाउ वुड यू स्टैंड आउट? और स्टैंड आउट करने के लिए आपको कोई मुख्तलिफ इंसान डिजाइन होने की जरूरत नहीं है. देयर आर स्मॉल थिंग्स विच हेल्प यू स्टैंड आउट, और इस मॉड्यूल के अंदर आपको उन स्मॉल
इनिशिएटिव्स के मुतालिक बताया जाए। इवन कहा यह जाता है कि आप जब अपने whenever you wear something and if you wear it properly and if you carry it properly, you will be noticed. I mean, this is a very simple thing, but ये वो common sense है जो बहुत common नहीं है. In past 14 years, I have taught at university level, I have taught at ACCA's different papers in scans and other institutions, and I have seen that with my own eyes. I have seen people across Pakistan and outside of Pakistan going for interviews, going for sales meetings, dressed up in such a badly fashion that, you know, even an ordinary individual would say that you need to be dressed up properly. So it seems that it is very common sense, but unfortunately, this is not common. So what sort of impression you are going to build if you are not even properly dressed up? Yet you want to be the individual who will be preferred above all others. How can be that? That's not possible. So standing out is the most important thing. This module will help you in creating a blend of skills which would make you enabled to stand out in an interview, in your job situation at the moment, wherever you are working, among your colleagues, among your seniors, within the boardroom, because you will be having an idea of the latest conversations that are affecting business world across the globe. And obviously, any chairman of the board, any executive director of the board, any chief executive or any head of the department would love to hear from you the latest ideas that are going to affect that particular sector that you are working in. Now, in past 7 years at ACCA, I come across a lot of ACCA members. I meet them, I greet them at events, in one-to-one meetings. What I always feel is missing in them is the understanding about economy. Number one, they don't have a clue what Pakistan's economy is comprised of, which are 10 big sectors of Pakistan's economy, how much they contribute to the exports of Pakistan, exchequer, Pakistan's treasury. Then in that economy and within their particular sector, what is the overall picture of that sector? What are different supply routes? What is the value chain that they are working in? How they are part of creating value, how the value can be created on a broad horizon. These are questions that I find usually members who struggle within their careers, they are unfamiliar, they completely don't have an idea about these things. And still they expect, still they complain that, you know, employers don't reward them. While we all know there are ACCA members who, even, you know, from the very beginning of their career, right after membership, land themselves in 6 digits. So what is different about them? Obviously people would say their destiny. ये नसीब की बात है, ये नसीबों की बातें हैं, पैसा नसीब से होता है, नसीब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम सुनते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, हम इनको सुनते हैं अपने एल्डर्स की तरफ से, और इसमें कोई शक भी नहीं है। नसीब और डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा कि आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी कैसे है। वो जिसकी डेस्टिनी ऐसी है, जिसको आप रश्क की निगाह से देख रहे हैं, हु यू रियली एनवी एंड हु यू रियली लुक अप टू, उसने कुछ ऐसी ट्रेड्स अडॉप्ट की हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स फॉलो किए हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि उसकी डेस्टिनी उसका साथ दे रही है थ्रू एंड थ्रू। और आपने कुछ ऐसी ट्रेड्स और कुछ ऐसे बिहेवियर्स को कंप्लीटली इग्नोर किया है जिसकी वजह से यू आर स्ट्रगलिंग। So therefore, ये मॉड्यूल आपको हेल्प करेगा to know about those behaviors, to know about those traits, and in real situations, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। क्योंकि ये भी अक्सर बात आपने पढ़ते हुए सुनी होगी कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होना। ये कॉमन चीज़ है, ये जब मैं पढ़ता था तब मैं भी सुनता था, जब मैं पढ़ाता था मैं तब भी सुनता था, मैं आज भी सुनता हूँ, और ये गलत भी नहीं है। ऑब्वियसली थ्योरी में और प्रैक्टिस में एक गैप होता है, और जो कुछ आप थ्योरी में किताबों में पढ़ रहे होते हैं वो आपका एक बुनियाद होती है, बट वो पूरी इमारत नहीं होती है। उस इमारत के अंदर, कोई भी इमारत है, उसकी बुनियाद के बाद बहुत सी और चीज़ें होती हैं।
उसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एस्थेटिक सेंस के लिए, एम्बियंस के लिए बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की जाती हैं, उसके अंदर फर्निशिंग होती है, बहुत कुछ होता है। सो सिर्फ एक बुनियाद नहीं होती है जो घर होता है या जो इमारत होती है, एक इमारत बुनियाद से आगे बढ़कर बहुत कुछ होती है। सो जो कुछ आप थ्योरी में पढ़ रहे होते हो ACCA के अंदर, वो आपकी फाउंडेशन लेट डाउन कर रहा होता है। बट ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो बहुत सारे डिफरेंट एनकाउंटर्स आपको होते हैं। ये मॉड्यूल, इसकी खूबसूरती ये है कि ये आपको थ्योरेटिकल चीजें नहीं सिर्फ पढ़ाएगा, बीच में रिफ्रेशर्स के तौर पे आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज जरूर करवाएगा, लेकिन इसका 80% जो कंटेंट है वो रियल सिचुएशन आपको देगा और आपको कहेगा कि अब आप फलां इंडिविजुअल को हेल्प करें। It will make you act as an advisor, that there are two people, Tony and Gary. They are having this conversation on audit report. Now you are there as an advisor and you need to help both Gary and Tony how to resolve the situation. So as soon as you put that hat of advisor on, you are able all of a sudden to become an employer, to become a partner, and you are able to think that how should I now resolve this? This is the beauty of this simulation. It really takes you into a certain role which you aspire to achieve in certain number of years to come. So probably all of you, most of you, or as many number of you who are working in the public practice, they would like to become partner one day. In this simulation, the real situation and scenario will take you into that zone where you would be able to put on the hat of that partner and be able to guide two people. One would be audit manager, one would be supervisor, how to resolve a situation on an audit report. So therefore, it is not only about theory, it's about practical real world scenarios, and then it creates value. And value is something, let me be very honest with you, Sajid, you have heard a lot about him, and we all keep on learning great things from him. He always says that, whenever you go to somebody, ask, don't ask for the value. First, tell them what value can I create for you, or this is the value that I can create for you. Mostly क्या होता है, हमें विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम काम कर रहे होते हैं, हमें पे रेस चाहिए होता है। जिस तरह अभी आप सबका टारगेट होगा कि आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपको 6 डिजिट सैलरी पे आप चले जाएं इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बट इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सवाल आपके माइंड में पहले आना चाहिए। कॉन्ट्रेरी टू दैट, जो सवाल यूजुअली आपके माइंड में सबसे पहले आता है वो ये होता है कि 1 लाख रुपया मुझे कैसे मिलेगा। सो एज ह्यूमंस वी ऑलवेज ट्राई टू think about our own benefit, rather it should be the otherwise. How can you create value for your employer that he is convinced that you should be hired at a alleviated pay scale and not the one at which you are currently? And I have seen it. इसके अंदर अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो लोकल कंपनीज के अंदर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के अंदर काम कर रहे होंगे। उनका अक्सर ये एक्सक्यूज होता है कि हम कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं करते, हम मल्टीनेशनल में काम नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ओनर मैनेज्ड कल्चर है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड किया जाता है चंद लोगों को हु आर क्लोज टू दैट ओनर मैनेजर, और हम रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। फिर हमारे साथ एक आई कैप का या किसी और प्रोफेशनल बॉडी का इंडिविजुअल है, इसकी वजह से हमें बड़ा कम प्रोटोकॉल मिलता है, हमें बड़ी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आई हैव सीन पीपल हु आर ACCAs who work in highly owner managed culture, highly entrenched owner managed culture, and yet at the same time they were the ones who were alleviated from a position of assistant manager accounts to the CFO of that group in a matter of 7-8 years. I am first hand witness of such situations, and I would be very happy to make you meet these people who have done that. And I know the inner story. They were not, in a relationship with that owner manager.
They never approached any senior MNA, MPA, politician for this alleviation within 7 years, while others were not able to have it. And what usually happens is that as human we have envious minds, and when we envy somebody we don't like them, because there is an envy on the positive side but usually the envy is on the negative side. और हम क्या excuses लेकर आते हैं, ये सियासी तौर पे बहुत कनेक्टेड है, इसके वालिद साहब पॉलिटिकली बड़े एक्टिवेटेड हैं, उन्होंने कहा होगा। और क्या आर्ग्यूमेंट होता है, हमारा नसीब नहीं है, ये तो भाई ये तो कर सकता है, ये तो टीसी इतनी करता है, ये तो खुशामद इतनी करता है, हमसे तो नहीं होती। और क्या कमेंट्स आते हैं, ये अंग्रेजी बड़ी टेढ़ी मारता है इसलिए इसको ज्यादा स्पॉटलाइट मिलती है। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमेंट्स you hear from people who always find a fault that this individual has not grown up to this point rightly and meritoriously. there will be something in between, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हमारा नेशनल कैरेक्टर भी है। हम जब भी किसी अचीवमेंट को देखते हैं हम हमेशा पहली चीज जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि ये इस वजह से हुआ होगा। तो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी इन परसेप्शंस को, इन पैराडाइम्स को कैसे चेंज करना है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीबडी हु वांट्स टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी on the conversation that I have done so far, please feel free to write it or unmute yourself and ask the question. Nizam, meanwhile, you can help me in reading question to me if I am unable to do that, because these are not in linear fashion. Sure. I'll start with the one, yes, the coming in. Rizwan Shehzad, reference की बात है, Burhanuddin, like me, Quab, but are not these real life scenarios in our country system, Sifarish and all that. Waris Izhar Khan, how to access EPSM. So these are the current. बिल्कुल ठीक है। सो मैं अभी EPSM की एक्सेस का मैंने बता दिया कि माई ACCA के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर आना चाहूँगा कि ये हमारे मुल्क का सिस्टम है और ये बात भी मैं बहुत सुनता हूँ। ज़्यादातर ये जिस तरह मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि एक है मरी जाना, मरी को देखना, मरी को विजिट करना, और दूसरा है उन लोगों से मरी के मुतालिक सुनना जो मरी गए हैं। कभी आप ये एक्सपीरियंस करके देख लें, अगर आप किसी एक जगह पर नहीं गए, हुंजा है, मरी है, कोई दूसरा मुल्क है, आप उन लोगों से पूछें जो वहां पे गए हैं, उनसे कहें कि व्हाट इट इज लाइक, मुझे बताओ। आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं 10 मुख्तलिफ जवाब आपको मिलेंगे। कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होगा, हर कोई अपने एंगल से उस जगह को देख रहा हो। इसीलिए होता यूं है कि हमें ये लगता है कि अमेरिका, यूरोप ये डेवलप्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरिट है, यहाँ पे हर चीज परफेक्ट है। तो मैं एक सवाल सबके सामने रखता हूँ कि अगर इखलाकियात, रवैये, वैल्यूज वेस्ट में, डेवलप्ड वर्ल्ड में इतनी ही अप टू द मार्क होती, तो क्या ये एथिकल मॉड्यूल, ये इस मॉड्यूल का एक पार्ट है ना, एथिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ये तो फिर सिर्फ पाकिस्तान के लिए होना चाहिए था। कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट हो क्या रहा है कि जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स आपने पढ़े हैं हिस्ट्री में, स्पेशली 1950 ऑनवर्ड्स, जब से प्रॉपर कैपिटल वर्ल्ड वजूद में आया है, वो सारे के सारे ओरिजिनेट बाहर के मुल्कों में हुए हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में हुए हैं। सो अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्चर है जहां पे नेपोटिज्म को या सिफारिश के निज़ाम को बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करा दिया गया है, तो मेरा सवाल ये होता है कि क्या दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता? बिल्कुल होता है। हाँ, डिग्री का फर्क हो सकता है, अपना जो 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 डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी है वो वेरी कर सकती है, कहीं 50% होगा, कहीं 40% होगा, कहीं 10% होगा, लेकिन परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। नेपोटिज्म हर जगह पे है, अमेरिका के अंदर है, यूके के अंदर है, ऐसा नहीं है। चूंकि हम लोग वहां पे गए नहीं है, वहां की जिंदगी हमने गुजारी नहीं है, हम अगर उन लोगों से पूछें जो कि वाकई ही वहां पे रहे हैं,
जिन्होंने चीजें एक्सपीरियंस की हैं वो आपको बहुत सारे फ्लॉज बताएंगे। सो हर ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ये फ्लॉज हैं। और एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, लोग रेफरेंस को और रिकमेंडेशन को कंफ्यूज करते हैं। रिकमेंडेशन क्या होती है? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मैजिस्ट्रेट की पोजीशन के लिए पहली मर्तबा अप्लाई किया बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे के सेशन कोर्ट के अंदर, तो मोहम्मद अली जिन्ना अपने प्रीवियस मेंटोर और टीचर के पास गए, हु वाज एन इंग्लिश, जिसका नाम मेरे ज़हन में अभी नहीं है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे रिक्वेस्ट की कि राइट मी अ रिकमेंडेशन लेटर फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, एंड ही डिड इट हैप्पीली। देयर इज नो रॉन्ग अबाउट इट। अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिक्रूटर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे आप काम करते हैं वहां का एक सीनियर हेड डायरेक्टर प्रमोशन के लिए कंसिडर करने से पहले एक रिकमेंडेशन जरूरी समझता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देयर शुड बी समबडी विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन हु इज अ मैन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड हु इज रिकमेंडिंग यू। देयर इज नो बैड, देयर इज नथिंग बैड इन इट। तो रेफरेंस को रिकमेंडेशन से कंफ्यूज भी हम बहुत दफा करते हैं। हाँ, ये मैं समझता हूं कि रेफरेंस ये होता है कि एक बंदा बीए क्वालिफाइड है और उसको प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सीट पे कोई बिठा दे क्योंकि पीछे से किसी की बहुत बड़े इंडिविजुअल की कॉल आ गई थी, तो मैं कहूंगा हाँ दिस इज रॉन्ग। बट अगर आपका मुकाबला हो रहा है बाकी प्रोफेशनल से और एक बंदा अपने लिए बेहतर रिकमेंडेशन लेकर आ गया है, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ही वॉज मोर स्मार्ट इन मेकिंग दैट मूव। व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ दैट? आप भी उस जॉब के लिए जा रहे थे, आप भी उस जॉब के लिए कम्युनिकेट कर रहे थे, आप भी उस प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे थे। आपके माइंड में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि आपके पास रिकमेंडेशन होनी चाहिए? इसलिए रेफरेंस रिकमेंडेशन, एक तो इसको कंफ्यूज ना करें। दूसरा, हर सोसाइटी के अंदर अपने अपने फ्लॉज होते हैं, रेफरेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहां पे चलता है। तो देयरफॉर हम इसको एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इट वुड एक्ट एज अ फैलेसी। नाउ अब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है अगेन, और ये इसका ताल्लुक आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ सिर्फ नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी लाइफ की हर चीज के साथ है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, your life with friends, your life with your colleagues, your life with your parents, your life with your spouse, your life with your children, your life within the neighborhood, your life with the people who you meet at public places, etc., etc. It's 360 dimensional concept that I'm going to talk about. So be very attentive, and I'm going to ask few questions once I'm done with this slide. What is the foundation of this universe or this whole I would say ये जो पूरी कायनात है, this whole universe or multiverse or whatever scientists would like to call it, what is the foundation of that? Any idea? And I would request Nizam to help me because to read the answers. आपके ख्याल में इस पूरी कायनात के खड़े होने की जो बेसिस है, फाउंडेशन है, वो क्या है? Balance, Hassan Saleh, Hira Jalal, faith and hope, Muhammad Arshad to be recognized. Okay, keep it Faith coming. and In Uzair Ahmad, trust, Junaid, Khalid, Allah. Okay. okay. Arsalan Shafiq, test. Great. Very good Again, answer. faith by Sumaya, Rizwan Arif, thought. Arsalan, Muhammad Arsalan, faith, trust, hope, belief, bandagi, perseverance. Mughis Khan says, I want to speak. An examination, confidence, faith, to be connected. Moin Chishti, let me learn. Test, right versus wrong, faith. An exam, a test by Allah. Justice, trust and faith. बिल्कुल ठीक है. Thank you very much for all these valid answers. Now
the one who answered trust is the one where answer is the closest. Trust is the foundation. और खुदा कुरान के अंदर एक आयत में ये कहता है कि हमने जब पहाड़ों को ये कहा कि इस को वसूल करें तो उन्होंने इनकार कर दिया. And then it was human who received that trust. And इसी तरह से बहुत सी कुरानिक वर्सेस हैं जो इस ट्रस्ट का जिक्र करती हैं. ये ट्रस्ट एक फाउंडेशन है सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द है, और इस ट्रस्ट को हम लोगों ने कैरी किया. खुदा की तमाम मखलूकात में से हम इंसान थे जिन्होंने इस ट्रस्ट को कैरी किया ऑन आवर हार्ट्स, और इसी बुनियाद पर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात कहा. हालांकि बहुत सी और मखलूकात हैं जो बज़ाहिर हमसे बहुत बड़ी हैं, जो बज़ाहिर हमसे ज़्यादा ताकतवर नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें सबसे ज़्यादा अशरफ कहा गया. वी आर द ब्लेस्ड वंस. और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये ट्रस्ट है दैट वी होल्ड विद इन आवर हार्ट्स. और आप इमेजिन करें एक ऐसा साइकोलॉजिकल पेशेंट, गॉड फॉरबिड, जिसको ट्रस्ट खत्म हो गया कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये होगा, जो वहम का शिकार. खुदा ने सबसे बड़ी चीज आपसे क्या मांगी है? ईमान, फेथ. ये भी एक आंसर आया था. तो फेथ और ट्रस्ट ये आपस में कनेक्टेड चीजें हैं. फेथ उसी का मजबूत है जिसको ट्रस्ट है अल्लाह की एग्जिस्टेंस पे, जिसको ट्रस्ट है कि वो कामयाब होगा, उसी के पास फेथ है. फेथ उसके पास नहीं है जो कि ट्रस्ट नहीं करता. और सबसे पहले आप खुद को ट्रस्ट करते हो, उसके बाद बाकी सब चीजों पे ट्रस्ट करना आपको आता है. एक खूबसूरत सेइंग है, द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू ट्रस्ट इज जस्ट ट्रस्ट. यानी ट्रस्ट सीखने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ट्रस्ट करें. जस्ट डू इट. मैं एक आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा एक खूबसूरत स्टोरी की तरफ, जिसका मैं अक्सर हवाला देता हूं, जो कि यूजुअली आपने अपने इंटरमीडिएट की स्टडीज में पढ़ी होगी. हिज फर्स्ट फ्लाइट. एक बड़ा फेमस स्टोरी है, मुझे राइटर का नाम नहीं याद, बहुत खूबसूरत राइटर है, बहुत अच्छा लिखता था. उसकी एक स्टोरी हमें पढ़ाई जाती थी. उस वक्त तो शायद मैं भी उस वक्त ऐसे ही पढ़ता था कि कॉम्प्रीहेंशन से पढ़ा और उसके आखिर में क्वेश्चंस होते थे. इस फर्स्ट फ्लाइट में फलां चीज का आंसर दें, हम आंसर रट्टा लगा के याद करते थे, पेपर दे आते थे, एंड ऑफ स्टोरी. लेकिन उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत मैसेज था. 3 बच्चे थे उस सीगल के, जिन्होंने वो स्टोरी नहीं पढ़ी, मैं थोड़ी सी क्विकली नरेट करता हूँ कि एक समुंदर किनारे एक प्लेट्यू के ऊपर एक सीगल का नेस्ट था. उस नेस्ट में 3 बच्चे पैदा हुए. माँ ने फितरत के कानून के मुताबिक उसको फीड किया फॉर अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज. जब वो टाइम विंडो खत्म हो गई, द मदर लेफ्ट एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्राइंग फॉर द फूड. She responded back and said, "It's time for you to fly. I cannot give you food anymore. Your time is up." 2 of those kids were able to listen and understand this. And what they did, they simply jump off the cliff, started flying, and go on their ways to find food. There was a third one who remained reluctant. And the whole story revolves around that individual. जरूर पढ़िएगा इसको, कहीं से ढूंढकर, इंटरनेट पर भी अवेलेबल होगी. हिज फर्स्ट फ्लाइट. राइटर उस तीसरे परिंदे के बच्चे के मुतालिक बात करता है. वो रिलक्टेंट है, उसको खौफ है कि वो अगर घोंसले से बाहर आएगा वो गिर जाएगा. नीचे चट्टाने हैं, नीचे जख्मी हो सकता है, मर सकता है, उड़ नहीं पाएगा, हिम्मत नहीं है उसके अंदर. और दैट बर्ड इज क्राइंग लाइक एनीथिंग. उसके पेरेंट्स एक टाइम तक उसकी कॉल को, उसकी क्राई को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको बताते हैं कि नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लाई, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड. एंड देन अ टाइम कम जहाँ पे वो उसको बिल्कुल छोड़कर आगे उड़ जाते हैं. दे डोंट रिस्पॉन्ड टू हिम, दे डोंट कम बैक टू हिम. चीखते 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 वो बिल्कुल निढाल हो जाता है. और जब निढाल हो जाता है तो एकदम फेंट होता है. फेंट होते ही उसको डिजीनेस फील होती है, चक्कर आते हैं और वो घोंसले से एकदम बाहर गिरता है. जब उसकी आंख खुलती है वापस, फेंटनेस से वापस वो रिकवर करता है, रीगेन करता है अपनी कॉन्शियसनेस, तो उसको पता लगता है कि ही इज ऑलरेडी इन द एयर. नाउ आउट ऑफ फियर वो करता सिर्फ ये है कि अपने
फड़फड़ाते हुए पर खोल लेता है। जैसे ही वो पर खोलता है वो उड़ना शुरू कर देता है। सो कहने का मतलब ये है कि ट्रस्ट अगर आप अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और ये ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है जिंदगी की, इसके बगैर कुछ नहीं है। हम सुबह उठते हैं, करीम ऑर्डर करते हैं, हमें ट्रस्ट है ना करीम आएगी, तभी करीम आती है। ऐसे साइकोलॉजिकल बेचारे पेशेंट्स हैं जो मेंटली इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनको किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं रहता कि ये हो पाएगी, हम अगर ये काम करेंगे तो ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब इस लेवल तक उनका ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है अमंग द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। हम ट्रस्ट करके बाहर निकलते हैं दैट वी विल रीच एट आवर डेस्टिनेशन। इमेजिन करें एक ऐसा खौफ जो आपके अंदर क्रीप इन कर जाए कि अगर मैं घर से बाहर पाँव रखूंगा तो आई विल बी किल्ड, and there are people who are psychologically disturbed, they are not able to do that. What is missing in them? The only thing is trust. They are unable to trust. अब ये जो ट्रस्ट है, ये ईपीएसएम का मॉड्यूल आपको ट्रस्ट वर्दी बनाएगा। योर एम्प्लॉयर, योर क्लाइंट, योर बिजनेस पार्टनर, योर इन्वेस्टर if you are in a startup would be able to trust you more. And that's why this is very critical. If people don't trust you, there is no way you are able to going to grow. No matter 6 digits, आप एक स्टेप आगे नहीं चल सकते। ट्रस्ट इतना सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में that people are able to trust you, they are able to depend upon you, you are dependable. इस मॉड्यूल के अंदर दो चीजें हैं, एथिक्स और स्किल्स, और ये दोनों चीजें आपके ट्रस्ट वर्दीनेस के फैक्टर को, आपके ट्रस्ट वर्दीनेस के बार को इतना ऊपर ले जाएंगी दैट यू डोंट इमेजिन, बिकॉज वट एवर यू गोइंग टू लर्न इज फार फार ग्रेटर देन यू हैव एवर इमेजिन्ड सो फार। सो ये ट्रस्ट वर्दी बनाएंगी आपको, विच इज द बेसिक फंडामेंटल वैल्यू of every society of the whole universe. And if you are not able to make people comfortable that they can trust you, then obviously you are wrongly guided. अब इस ट्रस्ट के एक पिलर को पकड़ते हैं, दो पिलर्स हैं, एक आपको प्रोफेशनली स्किल्स क्या हैं आपके अंदर, इनकी बात मैं जुमेरात को करूंगा तफसील से। अभी मैं अगले 25 मिनट में बात करूंगा एथिक्स के ऊपर तफसील से, और मैं आपको दो तरह की एथिक्स में फर्क बताऊंगा, और ये आपके लिए बहुत आई ओपनर होगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए who read literature, who attend trainings, because I'm going to give you a very subtly different idea of ethics. So let's see, एक है personality ethics. So a lot of success literature has been written in the past 150 years, especially. And in that 150 years, you know, especially in the last 70 to 100 years, success literature has predominantly focused on personality ethics. What is personality ethics? It's about your social image, how you try to impress upon others, that you possess certain good values through behaviors, through words, through body posturing. In this personality ethic, success is a function of public image, of attitudes and behaviors, skills and techniques that lubricate your interactions with human beings. और इस personality ethics की दो बड़ी branches हैं, one is human relation techniques है, और दूसरा positive mental attitude है. When I was 16 years old, I was part of this network development company who used to tell you how to develop a network within sales. To be an effective sales individual, how you actually develop your network. And we went through long and long trainings and discussions. Even our trainings used to last 24 hours a day, 3 days a week, and constantly going on with small breaks in between. And I used to be present there. I was doing matriculation then. And I had the opportunity of listening to Anthony Robbins then. That was 2001
One, when I was first introduced with Anthony Robbins, that he's somebody, a great trainer, a great guru who lives in the world. And I used to hear Anthony Robbins and so many other local and international trainers by then. Majority of that content was aimed at this, what is displayed in front of you: personality ethics. Do this, do that. And I'm saying this is not कि ये important नहीं है, but ये superficial in nature है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए मेकअप का, और ये आप सिर्फ फीमेल्स के लिए, मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं कर रहा. नाउ दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर इवन मेन एंड women both. There are abundance of cosmetics available out there in the market जो कि both men and women use करते हैं to alleviate their sense of beauty in the eyes of people. But we all know that is not real. That is superficial. How? Because obviously the moment you are going to wash your face away, it's going to be evident. So this is just like that. Personality ethics means कि आप चंद टेक्निक्स मास्टर करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने की. आप चंद टेक्निक्स अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने की. आप उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि अगर वो कहता है मुझे गोल्फ पसंद है, जी 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 गोल्फ मुझे भी बहुत पसंद है. आपको बस दो बातें पता है गोल्फ के मुतालिक, दो बड़े नाम हैं गोल्फ के जिनका आपको पता है. आपको ये पता है कि गोल्फ इतने होल्स की गेम होती है, इतने होल्स की गेम होती है, एंड दैट्स अबाउट इट. और आप उसकी बेस पे कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर रहे हैं. While truthfully, you don't know anything about golf except for these few bits of information that you have in your mind. This is what personality ethics are. कि आप अपनी पर्सनैलिटी में, आपको सक्सेस लिटरेचर में बताया जाएगा, ट्रेनर्स बताएंगे कि कैसे आपने इन मूवमेंट्स के जरिए, इन एटीट्यूड्स के जरिए मैनेज करना है. फिर एक और कॉमन चीज, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड. ये एक बहुत फेमस सेइंग है, आपने बेशुमार जगह पढ़ी होगी. This is also an outcome of a success literature which has been written in the past 100 years, impressing upon, emphasizing upon personality ethics. How to manage people, how to influence people. But effectively, in the words of Socrates, this is rhetoric without truth. एक ऐसा narrative जिसके अंदर substance नहीं होता. And presently, if I talk about a global situation with all of you, we have seen in the past couple of months how China has been able to isolate India on a diplomatic front and even on a military front. And this is not something, a legend I'm talking about. This is recent information. And I'm not trying to be politically aligned to a certain pole, either right or left. And I'm not trying to comment or opinionate on this matter, but I'm just stating a fact which is being reported across the board by different media entities and think tanks alike, that China in past couple of months has been able to not only isolate India on a diplomatic front, but on a military front as well. And India has yet to respond. And everybody is watching keenly how India is going to respond to the whole situation. Now, just go back and see the Bollywood movies that you have been watching. All the shows of India that you have been watching, we all watch Bollywood from the very beginning of our days, myself as well. We have seen a lot of Bollywood. And incredible India, secular India, great India, and whatnot. You see a consistent rhetoric being built up by the Indian nation, by the Indian think tanks, by the Indian intellectuals. But where it went, where it vanished away all of a sudden. There are two nations of almost equal population size, of almost equal territories in a region, but you see, the posturing from one is so daring, is of such substance that India has not been able to respond. And they come up with a new rhetoric every other day. Talk it about Rafale, talk it about anything else.
but effectively in substance, India has not been able to respond yet, as of now, as I speak. And this is what intellectuals across the globe are talking about, that India has not been able to respond effectively to this diplomatic and military posturing by the very neighbor China. Why? Because, in my opinion, and again, as I said in the earlier, I may be completely wrong and you have a complete right to disagree with me. I can only say what I tend to hear and read across the globe, written and said by different intellectual and think tanks, that India has been building up a rhetoric without much of a substance. They are not able to mobilize their military even now in this age. And this is something evident in 2001 standoff as well. They were not able to mobilize their army in the time they thought they would. So obviously all those movies in which different celebrities act so aggressively, so machoism that we tend to see, where is that? We can't find it. And there are so many other examples of this sort. So therefore, rhetoric without truth, something which is visible from the outside, but there is absolutely nothing inside, is of no use. Nobody is going to land themselves anywhere with this kind of a solution. And Socrates was very right in saying this almost 2500 years ago, that if you build a rhetoric without truth, it's not good to a society. So personality ethics are not going to help you in the long run. In the short run, they may. They probably will win you a meeting with a good employer. They probably will make you win a meeting with an investor or with a client. But in the long run, when it will come to the retention, or when it will come to the reputation of you, a sustained reputation, you can't stand it, because you were only going through the gimmickry of the trade and not the essence of it. Now there is another ethics, the one this EPSM module talks about, and that is character ethics. The most important thing. The character ethics tells us that there are innate, timeless principles of effective living, and people can only live a truly successful and happy life as they learn to keep their behaviors aligned with these principles. तो अल्लाह ने आपको, नेचर ने आपको इननेट प्रिंसिपल्स के साथ पैदा किया. ऑनेस्टी, बच्चा ऑनेस्ट होता है. अनलेस कोई उसको बताता नहीं है कि बेटा ये ऐसे कहना है, तब तक वो ऐसा नहीं करता, वो सच बोलता है. मैं अक्सर एक वाकया कोट करता हूँ अपनी फैमिली का. बैक इन द डेज व्हेन वी वर यंग, तो माय चचा वाज अ डॉक्टर, और नेबरहुड से अक्सर लोग ऑड टाइम्स के ऊपर उनको डिस्टर्ब कर दिया करते थे फॉर द चेकअप्स. सो एक दफा हुआ इस तरह कि उनकी जो छोटी डॉटर थी, स्मॉल डॉटर, वो शी वेंट टू द डोर, और somebody from the neighborhood asked के आपके पापा हैं घर पे? She came back, और my auntie told her के उनको कहो कि पापा नहीं है, and her papa was also there. She went back to the door and she said, पापा कह रहे हैं वो घर पे नहीं है. And I always laugh about the situation, how innocent a child is. He does not know how to fake things up. This means कि आपके unconscious में एक प्रोग्रामिंग होकर आती है जब आप इस दुनिया में आते हैं कि आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स, आपको सच बोलना है. बट एज you gradually move through the dust of this world, you start understanding, okay, this is how life goes by, and without realizing you become accustomed to those things. But let me tell you honestly, it's not going to help anybody. In the next slide I'll show you why. It's not going to help anyone. Your character is of the utmost importance, and that character is only developed when you incorporate these timeless principles into your behaviors. So a very famous quote by Emerson, he says, what you are shouts so loudly in my ears, I cannot hear what you say.
So even if through personality ethics you will try to communicate with people that you are a man of integrity, you are a woman of integrity, you are honest, you are objective, you are impartial, you empathize, it does not matter. In an interview, in a one-to-one conversation, somebody would hear about you and will say good things about you. Okay, fine, this individual is knows how to empathize. But effectively, when you come to the table, when you join an office, are you really empathizing with your colleagues? Are you really able to understand what they are going through? Another dimension to look at this perspective is that we all want to be understood. हम सब की ख्वाहिश होती है हमें समझा जाए. You know what emotional intelligence suggests, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा थर्सडे को. इमोशनल इंटेलिजेंस सजेस्ट कि सबसे पहले जरूरी है कि आप दूसरे को ये बावर कराएं कि आप उसको समझ रहे हैं. अगेन वही बात, सबसे पहले ये माइंड में मत लाएं कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए. उससे पहले ये सोचें आप उसको क्या दे पा रहे हैं. अक्सर लोग अपनी फैमिलीज में, अपनी वर्क लाइफ के ऊपर इस चैलेंज को फेस करते हैं. दे आर नॉट एबल टू गो वेल विद पीपल और विद फ्यू पीपल. व्हाई इज दैट? ये इसलिए होता है बिकॉज आप उनको नहीं समझना चाहते, आप ट्रूली एम्पथाइज नहीं कर पा रहे होते. और ये एक कांस्टेंट रेफर्मेशन है, ये मैं भी कर रहा होता हूँ, ये नहीं है कि मैं इसमें परफेक्ट हो गया हूँ. बट पर्पसफुली अगर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में इन चीज़ों को इनकलकेट करेंगे और एम्बेड करेंगे और ये आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होंगी, जिससे आपका एक करेक्टर निकल कर बाहर आएगा, दैट इज द इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट. So we trust people with good characters who have stood the test of the time and not those who merely claim to have a certain character. और ये हम सब जानते हैं, हमारे रिलीजन ने भी हमें ये बताया कि जो आपका अमल है वो सब कुछ है, उसी से पता लगेगा कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं. merely claiming something, जो प्रिंसिपल्स आपको बताए जा रहे हैं वो इसलिए टाइमलेस है बिकॉज वो इननेट है, वो आपके सब अनकॉन्शियस के अंदर है, वो आपकी रोम के अंदर है. मैं जिस तरह एक मशीन के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर एक दफा लिख दी जाती है और उसके बाद उसको कोई अमेंड नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल वो फैक्ट्री के पास वापस ना जाए और जिसने उस डिवाइस को क्रिएट किया वो उस रोम के अंदर चेंजेस ना करे. आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रोम है. जब आप पैदा हुए हैं उसके अंदर कुछ चीजें लिख दी गई हैं. आपने अगर इफेक्टिव फंक्शन करना है इस दुनिया में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को जो आपकी रीड ओनली मेमोरी में लिख दिए गए हैं, आप उनके साथ अपने रवैयों को, बिहेवियर्स को अलाइन करें. और फिर जब रियल सिचुएशंस आए तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने कैसे एक्ट करना है और आपको कुछ प्रिटेंड ना करना पड़े, बल्कि आप बिहेव ही वैसे करते हैं. सो these are a few quotes just to make you understand कि कैरेक्टर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है और अगर आप कैरेक्टर जाकर लिखेंगे वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आपको दुनिया के तमाम कामयाब लोग इसके मुतालिक बात करते हुए नजर आएंगे. Albert Einstein said most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong. It is character. एक स्टेटमेंट के अंदर इतने बड़े साइंटिस्ट ने, जो उसकी बुनियाद पर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न दुनिया खड़ी है, उसने एक फिक्रे में ये बात कह दी है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी, आपका कैरेक्टर लेकर जाएगा आपको. साइंटिस्ट कितना बड़ा इंसान होता है, कितना पावरफुल माइंड होता है, कितना क्रिएटिव होता है, कितना बोल्ड होता है, कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, कितना, जिसकी बात हसन सौले ने शुरू में की थी, कितना वो उस बैरियर को ब्रेक करता है जो कॉमन इंडिविजुअल कभी भी ब्रेक नहीं कर पाता. ही इज सेइंग कि आपका कैरेक्टर है जो आपको लेकर जाएगा. अनदर वन, अरिस्टोटल, एक और बहुत बड़ा जहन. What the statements is most anxious to produce is a certain moral character in his fellow citizens, namely a disposition to virtue and the performance of virtuous actions.
पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात करें, दिस इज व्हाट अ बिग स्टेटमेंट वुड बी लाइक। सोक्रेटिस ने कहा अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, क्योंकि कांस्टेंट रिफ्लेक्शन से आप रियलाइज करते हैं कि मेरे बिहेवियर्स में कौन सी वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे जो कि होने चाहिए। जिन्ना साहब सेड कैरेक्टर इज सेल्फ रिस्पेक्ट। अगेन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कि अगर आपका कैरेक्टर नहीं है तो वही बात है कि आपने अपने मुंह पर बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स तो अप्लाई कर ली हैं, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने आप को स्मार्ट तो कर लिया है, बट एट द सेम टाइम जो करने वाली चीजें हैं वो क्या हैं? करने वाली चीजें ये हैं कि हम क्या रात को टाइम से सोते हैं और सुबह टाइम से उठते हैं, जो कि अहम तरीन चीज है, जो आपकी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम में से कोई भी उसको फॉलो नहीं करता। फिर हम कंप्लेंट करते हैं मेरी स्किन ठीक नहीं है, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, जिनके पास स्पेंड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो अपनी पिगमेंटेशन सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं, क्रीम्स यूज कर रहे होते हैं। पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। जो एक टाइमलेस प्रिंसिपल है कि आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो आपकी जो स्किन है, देयर आर डिफरेंट एजेंट्स विच कम आउट एट नाइट एंड दे रिपेयर योर स्किन। नोबडी डज दैट। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम कीटो डाइट को फॉलो करके हम किसी तरह पतले हो जाए, लेकिन जो काम करने वाला है वो हम नहीं करेंगे। हम चबा कर नहीं खाएंगे कि हमें डाइजेस्टिव करने में डिफिकल्टी ना हो, बट हम अपने बेली फैट्स को कम करने के लिए हर तरह का सुपरफिशियल सोल्यूशन यूज करना चाहते हैं, सो दैट वी मे लुक अट्रैक्टिव, बट वो जो काम करने वाला है वो हम नहीं करते हैं। सिमिलरली ड्रिंकिंग वाटर इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। दिस इज अ टाइमलेस प्रिंसिपल। इसके अंदर कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है, मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया, रिलीजन आपको बता रहा है। हम वो काम नहीं करेंगे, बट हम एट द सेम टाइम बहुत सारे सुपरफिशियल चीजों को यूज करेंगे, बिकॉज अगेन प्रॉबेबली शायद वी आर हैव ग्रोन अप सीइंग रेटोरिक विदाउट ट्रुथ, जहां पे एक सेलिब्रिटी लाइट्स, मेकअप और मुख्तलिफ अफेक्ट्स के बाद एक हैंडसम खूबसूरत इंडिविजुअल निकल कर बाहर आता है। हमारे माइंड में हीरो का तस्वुर वो है, खूबसूरती का तस्वुर वो है। और अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो, मुझे हुआ है, अगर आप इन इंडिविजुअल्स को रियल लाइफ में देखें, इनको बगैर मेकअप बगैर कैमरा देखें, तो शायद आप कहें कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। आई एम नॉट अगेन गोइंग अगेंस्ट एनी सेलिब्रिटी, इट्स देयर बिजनेस, it's the showbiz. I'm not criticizing them, but what I'm trying to impress upon all of you is the difference between personality and character ethics. एक और मिसाल ले लेते हैं और फिर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आपने लाहौर में या कराची में किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आपके पास एक मैप है जो आपको हेल्प कर रहा है। जब आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है आप गलत डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, एंड व्हेन यू इंक्वायर फर्दर आपको ये अंदाजा होता है कि वो जो मैप आपके हाथ में था वो इस्लामाबाद का मैप था, वो ना लाहौर का था ना कराची का था जहाँ पे आप जगह ढूंढ रहे थे। इमेजिन व्हाट वुड बी द फ्रस्ट्रेशन। सो अभी ये जो अब्राहम लिंकन की कोस्ट है वो ये कि कोट इज सेइंग कि कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री एंड रेपुटेशन इज लाइक अ शेडो। द शेडो इज व्हाट वी थिंक ऑफ इट, द ट्री इज द रियल थिंग। आप अपनी रेप्यूटेशन को, सोशल इमेज को लोगों की नजरों में एनहांस करने के लिए बहुत सारी पर्सनालिटी एथिक्स को यूज कर सकते हैं, और बहुत सी इफेक्टिव टेक्निक्स एग्जिस्ट भी करती हैं। मैंने आपको बताया, मैं आज से तकरीबन 18 साल पहले, या शायद इससे भी कुछ अर्सा पहले, 18 साल पहले एग्जैक्टली, मैंने उन तमाम ट्रेनर्स को सुना है जो आपको शेडो पे काम नहीं का
ये जो टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जो आप ये मॉडल आएगा, इन पर कोई क्वेश्चन नहीं है. यू टॉक अबाउट एनी रिलीजन, यू टॉक अबाउट एनी कम्युनिटी, you talk about any profession, you talk about any time, these are timeless principles, universal principles who have stood the test of the time, who have been propagated by every philosophical age, who have been propagated by every religion, who have been propagated by every other think tank, that these are your guiding timeless principles which are going to make you strong as a character. And when these are combined, what comes out is a paradigm. पैराडाइम का मतलब है एक मॉडल, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, कलेक्टिंग देम इन वन वर्ड इज पैराडाइम. एज अ प्रोफेशनल, अगर आप अपना ट्रस्ट इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप अपनी ट्रस्ट वर्दीनेस को ऊपर लेकर जाना चाहते हो, दिस इज द पैराडाइम यू ऑल शुड हैव, एंड नॉट द पैराडाइम ऑफ अ पर्सनैलिटी एथिक्स ओनली. पर्सनैलिटी एथिक्स को सिर्फ यूज करें कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन काम करें अपने इस पैराडाइम के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप अपने इस पैराडाइम पे काम करेंगे, और मैं इसके ऊपर कुछ So if you can hear me, we are losing your audio. तो मैं आपको बताऊं माय फ्रेंड्स, कैरेक्टर इज योर डेस्टिनी एक्चुअली. Is it better now? Yeah, works fine now. जी निजाम, can you hear me? जी, I can. कितना टाइम लूज हुआ है? How much time I was not audible? Not much, sir. अभी बीच में थोड़ा there was an issue. Okay. So Heraclitus has said this, what I have written on this slide. Heraclitus was another great philosopher from the Greek times. He was earlier than Socrates, 2600 years old almost. So he said character is your destiny. आप बात करते हैं ना, फलां की डेस्टिनी है, फलां का नसीब है, फलां बड़ा धनी है किस्मत का, उसकी रीजंस हैं, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है. यू हैव टू फाइंड हिम आउट. कैसे? और मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग कैरेक्टरलेस हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज द मोर you are able to strengthen these values in your behaviors, the more you are able to improve your character, and the more improved your character is, the more destined you are. And you have seen, मैंने कुछ statements, कुछ quotes आपके साथ share किए हैं, and you can find thousands and thousands of that. This is not something जो मैं कोई न्यूटोनिक आइडिया resurface कर रहा हूँ. This is not something कि जो मैं खुद से create कर रहा हूँ. This is evident across all spheres of life, across all times. Everybody you would see propagating this fact that character is your destiny. Character ही आपकी destiny बनाएगी. और कैरेक्टर कैसे बनेगा? कैरेक्टर आपका बनेगा जब आप उन वैल्यूज को डिपिक्ट करेंगे जो के टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर बेस करती हैं. And these are those values जो ACCA के रूल बुक के अंदर लिखी हुई हैं, जो IFAC के कोड ऑफ कंडक्ट में दी हुई हैं, और जो किसी भी दूसरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होंगी. You need to have integrity, not taking any particular influence. चूंकि खुदा ने आपको इन चीज़ों के साथ पैदा किया है, जब इंसान इन चीज़ों के ऊपर अमल करता है वो उसका रिवॉर्ड पाता है. दो चीज़ें हैं, खुदा ये कहता है कि एक ईमान और दूसरा अमल साले. ये दो चीज़ें आप जब पकड़ लेते हैं, जितना ज़्यादा आप इनके करीब होते चले जाते हैं, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड्स अल्लाह के इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाते हैं. अगेन एवरीबडी बिलीव्स दैट. अगर हमने किसी ऐसे माइंड फ्रेम ऑफ माइंड में भी चलना है जहां पे हम वननेस की एग्जिस्टेंस को नहीं कंसिडर करते, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करता हूं. इवन एन एथियस्ट कांट ओवर रूल एंड रिजेक्ट कि ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स नहीं है और इनका कैरेक्टर में होना जरूरी नहीं है. कोई एथियस्ट भी इसको नहीं कह सकता.
फर्क सिर्फ ये है कि वो अल्लाह की जगह नेचर का लफ्ज यूज करते हैं, हम लोग नेचर की जगह अल्लाह का लफ्ज यूज करते हैं मुस्लिम्स। और इसी तरह जो हमारे बाकी ब्रेदरन इन रिलीजन हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो ज्यूज हैं, या चाहे वो हिंदूज हैं, या चाहे वो कोई भी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वो अपनी अपनी डेटीज को रेफर करते हैं इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ। उनकी जो कहानियां आप सुनते हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स की बिहेवियरल एक्सप्रेशंस हैं जो उनकी डेटीज ने इस दुनिया में आकर एक्सप्रेस करके दिखाई हैं। तो अगर आपका पैराडाइम इज consists of these principle, you are going to be a professional who will be trusted by everybody around him or her, and that's where the growth began, that's where the alleviation began। कोई आपको क्यों ज्यादा पैसे दे, सवाल है ना ये, सबसे पहले पूछें आज अपने आप से, जहां पर भी आज आप लोग हैं, पूछें अपने आप से कि कोई आपको अगर अभी एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है फॉर अ जॉब, तो वो आपको x+1 क्यों दे? What reason have you given him or her so that he pays you more than what he or she is paying you now? Have you been able to foster more trust by your behavior? Have you displayed certain behaviors where you were full of integrity, where you acted objectively? Professional competence, for example. In 14 years, I hardly come across people who do things with due care and professionalism. Often they just want to rush things out, कि बस जान छुड़ाओ इससे, आज गुजारो कल की कल देखेंगे। Professional behavior. How many of us are truly depicting professional behavior? So मैं आज की कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करता हूं इस नोट के ऊपर कि इस मॉड्यूल में दो चीजें हैं, एक एथिक है और एथिक्स हैं, और एक स्किल्स हैं। एथिक्स के ऊपर मैंने काफ़ी बात कर ली है, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सी बात की जा सकती है, लेकिन ये है कि देयर इज़ नो एंड टू इट, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि ये मॉड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर एथिक्स की कॉन्वर्सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये एक इंटेग्रल फाउंडेशन है आपकी एज अ प्रोफेशनल। अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट करके एनालाइज नहीं करेंगे आप अभी कहाँ पे खड़े हैं, देयर इज गोइंग टू बी चैलेंजेस फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। और जो लोग ये कहते हैं, लास्ट बात, कि जी इस दुनिया में, इस मुल्क में क्या वजूद है एथिक्स का, यहाँ पे टैक्स चोरी होता है, यहाँ पे सिफारिश से लोग आगे पीछे होते हैं, यहाँ पे हर तरफ करप्शन है, यहाँ पे हर तरफ नेपोटिज्म है, यहाँ पे हर तरफ ये है वो है। आई एग्री, तो ये कहा नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, even if you are the last individual on this earth who is ethical and rest of them are not ethical, पहले तो ये नोशन एक आपकी परसेप्शन से ताल्लुक रखता है, एग्जिस्ट करता है, जरूरी नहीं है, आपको लगता है कि दूसरा एथिकल नहीं है। जिस तरह मैंने अभी छोटी सी बात बताई, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो रेफरेंस और रिकमेंडेशन कोई नहीं क्लैरिफाई कर पाते। लेकिन चले, अगर मैं फैक्ट भी मान लूं कि मेजॉरिटी जो है वो अनएथिकल है, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप आखिरी इंसान भी हैं, इफ यू आर द लास्ट ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट और इन दिस कंट्री हु इज बिहेविंग एथिकली, ट्रस्ट मी, this is not going in vain. This is not going in vain. This is something which will get you actually and eventually where you want to be. Because if you feel it isn't the case, then I think you don't believe in one God, and you don't believe that God is only capable of rewarding people based upon their character. And if that is the case, then obviously we need a altogether different sorts of conversation. But I know that all of you believes that God is the only one who is capable of rewarding you whatever you desire in life. He is big enough to give you whatever you want. But first think, what does he expects from you? These are the behaviors, these are the guiding values, these are the timeless principle he wants you to construct your life on. And once that is done, trust me, there are going to be endless rewards, not in this world only, but in the hereafter as well. Finally, I would like to give you a task. So you have to write a short story
not more than 300 words, in which you will describe a situation where you faced an ethical dilemma encompassing the following: what was the ethical dilemma, and what were the consequences of, sorry, I was not able to complete this sentence, my apologies. What were the consequences of taking a decision that you took, and third, how that could have been different. I would like to see how impressive you are in writing, in expressing, because the more good and impressive you are in writing a story, the more impressive and expressive you would be in your verbal communication, and more impressive you would be in your through communication through body language. So it all starts from the writing. I would like to see how eloquently you would be able to write. So there will be three things in these 300 words. You have to be comprehensive, you have to be concise, you need to use good English language, uh, and what you have to do, you have to write a short story in which you will talk about an ethical dilemma that you faced in your professional life. What were the consequences of the decision that you took, and how do you think that decision, or how do you think that situation could have been better dealt with? So this is your task, uh, and I would like to receive these, uh, in my email. Let me share with you. Nizam, usually who is the recipient of assignments? Harun Saab, or yourself? So it is me basically, sir. Okay, so all of There you can are send your multiple responses. ways. Yeah, Okay, they can be uploaded on the Google Drive, but last time we were facing some issues. I mean, some individuals who do not have a Google account, they were facing issues in okay. uploading. So in that case, we suggested that they could be sent to Nizam also. So send it to Nizam with your name, and with your obviously, obviously the name only. I would be able to recognize with the name, and I would be able to announce who did well. And on Thursday, I would give you another task, and then collectively I will be sharing with you the results. Afterwards, maybe I'll take a short window afterwards in another session, or maybe I'll communicate this through email to all of you, or whatever uh, convenient way possible. I will coordinate with Arun Sab on that. So you need to write a short story of an ethical dilemma and how you dealt with it, what were the consequences of that decision that you took, and how it could have been different if you had picked another choice rather than the one you picked actually. So this is your task. Uh, from me, that's that. If there are any questions, I'm most happy to answer. Please shoot your question, and I would request Nizam to, relay them to me. Thank you. So Nizam, if I could request you, if there are any statements, questions, comments, you Okay, could so relate to. Wazir Izhar Khan says, thank you, good session. Hassan Saleh, absolutely beautiful session. Thank you. All right. Okay. Uh, thank you so much for the wonderful session on ethics and character building. Mohammad Arshad, it was a wonderful self-reflection. Nasir Khattak, thank you, sir, an enlightening session really. Waqas Ahmed, intellectual session. Nakash, such a great session, a lot learned. Sayed Omer Akhtar, thank you for the insights. Junaid Khalid, nice session. It's true session, but not 100%. Sorry, come again. It's not. But not 100%. Junaid had made a Is he? comment that some situations are not 100% true. So he disagreed. I mean, I've been looking at his previous comments as well. Yeah, yeah. Obviously, as I said earlier on, you have every right to disagree, and this is not something which I claim to be perfectly correct. So okay, G Nizam, please. Any other
question, comment? Ji, Maria Sheikh, very nice session and much needed, very essential concept discussed. So Maya, thank you for an informative session and I learned a lot of things. Thanks, Rahila. Is self-confidence and trust in oneself a same thing? At times I lack the former in such circumstances. How to go about it? Asks Aslam Mehmet. So Arsalan, thank you for this question. Obviously, self-confidence and trust. When you are able to trust yourself, as I said in the beginning, the first point to start trusting is by trusting yourself first. And that is where it gives you a self-confidence. You know, in our ACCA, we follow certain behaviors which are drawn from these timeless principles that are everywhere across ACCA. So it's not only members, all the staff members are also advised and reaffirmed of these timeless principles again and again, in different workshops, in different events, in different messages from our local executive team, from our global executive team, from our council. So you see, there is a behavior which goes by, I recognize my own impact. So this is one of the behavioral statement that we are expected to follow and depict on the workplace. So what does this suggest? This suggests that, you know, I as an individual, I as a professional, if I do not feel confident that this is what I can deliver, this is what I can do, how am I going to make others believe that this is what I am capable of? So trust in yourself is the first step that enables you to then trust others as well. Usually we see कि जब हम छोटी उम्र में होते हैं तो हमें अगर ग्रूमिंग में ट्रस्ट की वैल्यू की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया जाता है तो हम ट्रस्ट करते हैं. जिस तरह आप अक्सर देखते होंगे कि पीपल हु हैव बीन ब्रॉट अप आउटसाइड वर्ल्ड, जहां पे थोड़ा सा कदरे बेहतर है ट्रस्ट फैक्टर सोसाइटी के अंदर, वो जब पाकिस्तान में आते हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स. व्हाई इज दैट? बिकॉज उनके अनकॉन्शियस माइंड में ट्रस्ट एक फंडामेंटल वैल्यू होती है. अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ सिचुएशन जहां पे एज अ सोसाइटी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहा है. खास तौर पे जो आप लोगों की जनरेशन है वो इसको बहुत डिफरेंट तरीके से देख रही है कि ट्रस्ट हमें बिल्ड करना है, और उसका एक बेस्ट तरीका होता है पॉजिटिविटी. ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. आपको फेलियर्स आएंगे, मुझे भी इन 14 सालों में एक नहीं बेशुमार फेलियर्स आए. अगर मैं स्टार्ट शुरू करूं तो शायद लिस्ट खत्म हो जाएगी. सो फेलियर इज नॉट समथिंग जो आपको डिप्राइव कर दे ट्रस्ट से. ट्रस्ट का मतलब ये है कि आपको अपनी स्किल सेट पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी सेल्फ पे बिलीव है कि यू आर बॉर्न टू डू बिग थिंग्स. और जहां पर भी कहीं नेगेटिविटी आए उसको बिल्कुल कोशिश करें कि वो आपको अफेक्ट ना करे. ये सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है, बिकॉज आपको मेजॉरिटी लोग जो दुनिया में मिलेंगे वो मिलेंगे जो आपके ड्रीम्स पर आपको हंसेंगे, दे विल लाफ अबाउट इट. और वो एक बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ बिलीव शैटर हो जाता है और आप अपने आप को ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं. इसलिए डोंट अलाउ these situations to affect you badly. You as a human have great potential. It is only the restless pursuit of your passion that will take you to that destination. What is missing always is a restless pursuit of your ambitions, your aspirations. Whenever you aspire big, there are going to be a lot of challenges, a lot of difficulties in that way, because you are trying to stand out. As I said earlier on, it is not easy to stand out. It would be easy in saying it. Doing it is a very difficult job. When you try to stand out, you will face a number of obstacles, a number of difficult situations. But those situations should not make you bow down in front of them. And your ability and your restless pursuit of your passion is what is going to take you through all those obstacles. And that has been evident. If you read about biographies, I always suggest people that read biographies. And if you are not that much reading aholic, just read about Muhammad Ali Jinnah, who he was when he come back in Bombay from England. Wow, how much money he had. His father's business was completely destroyed in the years he was in England. The political and
economic landscape of India was completely changed when he came back. He even lived at a railway station hotel when he first went to Bombay to start his career. Now imagine what a railway station hotel would be like in those days. And then he ended up having a Malabar Hills home, which is still the most beautiful homes across the world, among the list of those homes. So read biographies. You will come to know that all those people who achieved great things had great difficulties. What was common in them? Restless pursuit of their passion. So in your case, you are aspiring to land yourself into six digits. There are going to be obstacles, there are going to be challenges, but your restless pursuit will take you there. And therefore self confidence is after you start trusting in your own self. Nizam, anything else? Okay, Fahim, great session, especially learned a lot for practical approach to dilemmas we face on daily basis. Safe, great session. Shuma's great session. Many confusions cleared. Akib Nasnullah. Please send the links in the email for the submission of business case, canvas models, and ethic activity on the email, so it will be convenient to everyone. Akib, I'm regularly sharing the links for everything on the WhatsApp, and for the submission of this ethical dilemma file, I have made the form, so all who are able to submit that on the Google form, they should. So I'll be sharing that shortly. Okay, Shuma's great session again. Right, thank you so much. Right, thank you, Hassan. Right, so we have a question, a repetitive question, sir, from you. Will your presentation be shared with them? Yes, definitely. I'll share this presentation after Thursday's session is ended. So this is a document, live document in progress. I will share the complete slide deck with all of you once we are done with the next episode, which is on Thursday. So I'll do that. No, it's on So Wednesday. it will be uploaded on the drive, the one handouts link you have. So it will be uploaded there. And the session is on Wednesday. The next session for this members group is on Wednesday. Yeah. Apologies, Wednesday. Yeah. So any other questions? And I would ask Harun Saab to jump in. All right, I will jump in. Thank you very much, Hassan. Very interesting session. Very intellectual, as members are calling it. I think this is never ever in life you have a a perfect answer to every situation, right? Everything that we discussed here was discussed through experiential learning, and therefore there can be disagreements, and that's the beauty of having a dialogue and discussion. So thank you very much, Hassan. We've covered the ethics part of the EPSM module today. What I will encourage all the participants to do, and Hassan also in the next session, that we would make it more participative and conversational, right? So rather than poor Hassan talking the entire 2 hours, I think it will be useful if you can pull in comments from the audience also, audio comments, and people are just like in the previous sessions, they're contributing verbally as well as through the questions dialog box. So that will make it more participative, and a more interesting learning at the same time. Hassan, the next session is about professional skills, yes? Yes, definitely. That is, I'm more going to talk about the professional skills, especially data analytics, especially emotional intelligence. So these are few, and especially creativity. These are a few questions that are in my mind to talk about more in the next session. Right, and do you think the
one session is going to be enough for all these topics to be covered, or do we need more time? Well, I'm Skills. happy to spend more time if we have more time, because obviously I know this is a big program scheduled in a certain way, and all these members have to cover a lot of topics. So if there will be time, I'm more happy to go for a third session. No issues at all. Okay. Okay. I think Uzair wants to say something. Uzair Ahmed. Let's see if we can unmute him very quickly. Uzair, we've gone over time for about 30 minutes. So we unmuted you. You can speak. Assalamualaikum, sir. Can you hear me, sir? Yes, we can hear you. I have a question regarding the today's topic. Actually, I faced a scenario recently. My boss has given me an assignment, but my immediate boss had a different objective of that assignment. So I was मैं एक जगह पे स्टक हो गया कि मैं किस डायरेक्शन को फॉलो करूं, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग जो थी वो इमीडिएट बॉस, मेरी परफॉर्मेंस इमीडिएट बॉस की उसकी तरफ से जज होनी थी और मार्क होनी थी, लेकिन मुझे जो डायरेक्ट असाइनमेंट दी गई थी वो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एक डायरेक्टर थे हमारे ऑडिट कमेटी के, उनकी तरफ से असाइनमेंट दी गई थी ऑडिट डिपार्टमेंट में। तो इस केस में व्हाट शुड वी डू? अभी हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी को भी साथ में देख रहे हैं, तो इस केस में जरा मुझे एडवाइस करते हैं कि हमें किस तरह इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने इमीडिएट बॉस की डायरेक्शंस को जो है वो मानता हूँ, तो मेरी एक्चुअली जो असाइनमेंट थी उसकी ऑब्जेक्टिविटी फुलफिल नहीं होती रिक्वायरमेंट जो है, और अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ तो माई इमीडिएट बॉस जो है वो मुझे उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा, और मेरी परफॉर्मेंस और जो बाकी सारी केपीआईज हैं उन सब के ऊपर फीडबैक जो वो मेरे इमीडिएट बॉस ने देने हैं। तो इसके अंदर हम एथिकल कोड्स को किस तरह एक्सरसाइज करें, इस पे जरा एडवाइस कर दीजिएगा। Ji Harun sir, would you like to go or you want me to answer? No, please go ahead. Oh, okay. So उजैर, इसके अंदर इस तरह से है कि दो डायमेंशंस हैं इसको देखने की। एक तो ये है कि मैं अब जिस तरह अगर मैं अपने रोल की बात करूं तो आई हैव अ कांस्टेंट रिपोर्टिंग टू 2 इंडिविजुअल्स, और आई अंडरस्टैंड एट टाइम्स एक प्रोफेशनल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वन स्पेशली जब कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आ जाएं। लेकिन आपके केस में चूंकि ये वन ऑफ सिनेरियो लग रहा है मुझे और ये कांस्टेंट सिचुएशन नहीं लग रही है, इसके अंदर होता ये है कि अगर आपको डायरेक्टर ने कोई भी असाइनमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये वक्तन फवक्तन इस तरह की कुछ असाइनमेंट्स आती रहती हैं, तो आई एम फेसिंग करंटली नाउडेज सच इश्यूज। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस। ये हर जॉब में होता है, और यहीं पे एक प्रोफेशनल का रियल टेस्ट होता है कि किस तरह से इन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज को अलाइन करता है वो। पहली चीज इसके अंदर ये है कि जो असाइनमेंट आपके पास आई है वो आपके केपीआईज और आपके परफॉर्मेंस कार्ड से ताल्लुक नहीं रखती है, और ऑब्वियसली उस पर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जो कि आप यूजुअली स्पेंड करते हैं अपने रेगुलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को एड्रेस करने के लिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके जो इमीडिएट बॉस हैं वो आपको शायद वाइल द परफॉर्मेंस रिव्यू इज टेकिंग प्लेस वो आपको इसका ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहे होंगे। सो सबसे पहले तो स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज वेयर यू एक्चुअली क्रिएट वैल्यू। जो मैं बात कर रहा था कि जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन खुद अंडरस्टैंड करती है कि इन आपको वैल्यू रेसिप्रोकेट होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चैलेंज आता है वो ये कि आपको अपने टाइमिंग, अपने वर्क आवर्स को, अपने माइंड को स्ट्रेच करना पड़ता है कि एट द सेम टाइम जो आपका परफॉर्मेंस कार्ड है उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो तो आपने करनी ही करनी है, उस पर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो असाइनमेंट आपको सीनियर बॉस की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से आई, आपने उसके लिए भी टाइम क्रिएट करना है। और आपने इसी जगह पे अब साल के तौर पे पर्सनल इफेक्टिवनेस का जो मॉड्यूल है इस EPSM के अंदर वो आपको यही बताएगा कि आपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर किस तरह से ज्यादा काम करना है। अब मैंने अपने 14 इयर्स में बहुत से लोगों को देखा है जो, अगर आप दो प्रोफेशनल्स को कंपेयर करो तो एक इंडिविजुअल उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है इन अ मैटर ऑफ 8 आवर्स, और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो कम आउटकम प्रोड्यूस कर पाता है। वेयर द डिफरेंस लाइज इज पर्सनल इफेक्टिवनेस। सो एक तो ये एलिमेंट है जो आपको लर्न करना होगा। दूसरी चीज, अगर असल रियल जो एथिकल डिलेमा है वो तब आएगा कि जब आपके डायरेक्टर आपको कोई ऐसी असाइनमेंट दे रहे हैं जो कि
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज या जो आपका ऑनगोइंग रिदम है काम का उसके अगेंस्ट है, जो कि यूजुअली नहीं होता। बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो कोई असाइनमेंट दे रहे हैं तो वो भी वर्क के अंदर ही आ रही होगी, वो भी उन्हीं वैल्यूज और उसी मॉडल के अंदर आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं अलहदा से ऐसा काम दे रहे होंगे विच अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। असल चैलेंज तब पैदा होता है जिसको हम एथिकल डिलेमा कहते हैं, कि आप यू आर फेस्ड विद अ सिचुएशन जहां पे एक तरफ प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि आप ए पाथ को फॉलो करें, जबकि आपके जो बॉस हैं, जो सीनियर हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पाथ बी फॉलो करें। वो ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन होती है। इसमें जो मैंने आपकी बात सुनी है, इसमें जो मुझे अंदाजा हो रहा है वो ये कि एक तो आपके ऊपर जो स्ट्रेस है इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंडिंग वो इंक्रीज हो रहा है। ये असाइनमेंट आपके परफॉर्मेंस कार्ड में जाकर एड ऑन नहीं कर रही है, आपके बॉस इसका कोई ड्यू क्रेडिट आपको नहीं देंगे, तो उसका एक ही हाल है कि आप अपने आप को स्ट्रेच करें, कम टाइम में ज्यादा काम करने की कोशिश करें और अपनी पर्सनल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करें। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनसे एक्सपेक्ट करती है जो ये सब कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई एडिशनल टास्क आपको दिया जाएगा, जब भी कोई एडिशनल चीज जो आपके जेडी का या आपके रेगुलर परफॉर्मेंस कार्ड का पार्ट नहीं होगी, वो आपको सिर्फ तब दिया जाएगा जब समझा जाएगा कि आप इसके काबिल हैं कि आप वो डिलीवर कर सकते हैं। सो इसलिए इस मामले में आप अपने आप को अपॉर्चून कंसिडर करें कि ये एक मौका आपको फराहम किया जा रहा है टू क्रिएट एक्स्ट्रा वैल्यू। And once you accept such tasks without any reservation, that is the time you actually start growing within that organization and you start attracting people's applaud for yourself. So अभी तक तो जो मैं समझा हूँ वो यही समझा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि two things are in conflict with each other in terms of values and principle, but it is only about an additional task which has been given to you, which is not directly going to affect your performance rating at the end of the year or maybe at the end of the 6 months. That is completely fine. This is what corporate world is all about. Everywhere you go, this is a norm. I hope I have understood your question rightly and responded to you accordingly. जी सर, आपने इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो मैंने फेस किया, इसके अंदर दोनों सिनेरियो थे। एक तो वो जो आपने बिल्कुल एड्रेस कर दिया, दूसरा सिनेरियो यही है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एंड प्रोडक्ट हमारी रिपोर्टिंग जो रिक्वायर्ड है, जो डायरेक्टर साहब रिक्वायर कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट इमेज शो कर रही है। लेट्स से आई कोटेड के हम एक प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे थे, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास से टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं था, सॉरी, उसमें सिर्फ हमने इनकम स्टेटमेंट के कुछ कंपोनेंट्स का ऑडिट करना था। अब उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो डायरेक्टर साहब रिक्वायर कर रहे थे वो चीज बिल्कुल डिफरेंट थी जो मैनेजर साहब हमारे जो हमें डायरेक्ट कर रहे थे, जो मेरे इमीडिएट बॉस हैं। अब वो कह रहे थे कि जी आप इसको बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट में लें, और डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि जी आप इसको बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट में। एक पर्सन कह रहा था कि जी आप इसको एज एन ऑडिट असाइनमेंट टेकअप करें, दूसरा पर्सन कह रहा था कि जी आप इसको ऑडिट कम अकाउंट्स फंक्शन जो है ना इसमें परफॉर्म करें। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम कि हम इस वक्त इस सिनेरियो में रिपोर्ट किसको करें, क्योंकि मेरी जो भी रिपोर्ट डायरेक्टर साहब तक जानी थी दैट वुड बी थ्रू माय इमीडिएट बॉस। तो मेरे इमीडिएट बॉस जो थे, इवन दो जब मैंने रिपोर्ट फर्निश की तो मेरे जो डायरेक्टर साहब थे ही वाज ओके एंड ही अप्रिशिएट मी कि आपने ये बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उससे पहले जब वो मेरे मैनेजर साहब के थ्रू हो के गई, उन्होंने उसको अप्रूव तो कर दिया, बट दे हैव सम रिजर्वेशंस के इसके ऊपर जो भी होगा यू विल बी रिस्पांसिबल। सो आई टुक दैट डिसीजन और फिर उसको हमने फॉरवर्ड किया और वहां पे जो है वो सारा केस। सॉरी, लेट मी इंटरफेयर है। ये बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है और आपके साथ हुई है। आई थिंक आई एग्री विद द अप्रोच दैट हसन हैज सजेस्टेड, बट एट द सेम टाइम conflict management within your team. So अगर आपको दो conflicting messages आ रहे हैं, so is it okay to continue with your line of reporting, or is it okay to continue bypass, escalate, get both these individuals on the same email group, on the same email chain, and get clarity about your assignment? Yeah, maybe the understanding between the director and the manager and your line manager isn't the same, and therefore it's best to, before you attempt the job, to have crystal clear idea of what is expected of you. That is the best approach. कि आप job take up करते वक्त
अगर क्लैरिटी का इशू है या आप कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं तो उसको आयरन आउट करवा लें, अदरवाइज एंड अग्री जी हसन बताएं। जी आप कंटिन्यू करें, वो पॉज आ गया था, आई थॉट यू स्टॉप्ड। या तो और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो आई थिंक सिंस योर डायरेक्टर इज मोर सीनियर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज अ बेटर व्यू ऑफ थिंग्स, it will be okay to go to him and tell him कि जी मुझे थोड़ी सी contradicting indication या assignment की details मिल रही हैं from my line manager. Can I directly send these details to you and can you please speak with my line manager if he's okay about it? So I think there are multiple ways of handling it, and eventually I think you cannot afford your director of the organization to go against you. However, in certain situations, you can have a disagreement with your immediate line manager. So, Hassan, आप कुछ कहना चाह रहे थे before we close this matter and I think move on? Yes. Hassan, are you there? Is it me who have lost? Can you hear me? Yes, we can hear you. Go on. We're just waiting for your comment. Can you? Okay. So agreeing with what Haroon साहब has said, उजैर, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि अगर डायरेक्टर आपसे एक डिफरेंट एंगल से सेम रिपोर्ट को व्यू करवाना चाह रहे हैं तो इट इज एडिंग टू योर स्किल एक्चुअली। अक्सर ऐसा होता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो बाज दफा आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच यूज करते हुए कुछ डिफरेंट एंगल्स को एक्सप्लोर करना चाहती है इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से, या सिमिलर डेटा को देखने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं। सो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक डिफरेंट आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं कि द सेम डेटा और इंफॉर्मेशन को, एक तरीका तो बिजनेस एज यूजुअल रूटीन है ऑर्गेनाइजेशन की, उस तरीके से उस लेंस से उस इंफॉर्मेशन को देखा जाता है, बट एट द सेम टाइम एक सीनियर इंडिविजुअल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसको इस एंगल से भी एनालाइज करके मुझे बताएं। दूसरी चीज मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये लर्न किया कि लाइन मैनेजर इज ऑलवेज की। आप कोई भी ऐसी चीज मत करें कि जिससे लाइन मैनेजर ऑफेंड हो, बिकॉज ऑब्वियसली इवेंचुअली आपका जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोफेशनली भी अपने लाइन मैनेजर को लूप में रखना आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सो देयरफॉर इसके अंदर इम्पोर्टेंट यही चीज है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ही रिपोर्ट है बट उसको दो डिफरेंट एंगल से आप व्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, इसमें जो चीज आपके चैलेंज में इजाफा कर रही है वो टाइम है, वो एफर्ट है जो आपको एडिशनली स्पेंड करना पड़ेगी, और उसका शायद कोई इमीडिएट रिवॉर्ड आपसे कमिट नहीं किया गया, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेयर एक्चुअली यू स्टार्ट ग्रोइंग। कुछ शुरू में आपको दिखाना पड़ता है कि यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग। सो जिस तरह आपने कहा आपको आपके डायरेक्टर ने अप्रिशिएट किया, नेवर फॉरगेट कि दिस अप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी इन योर एडवांटेज वंस, यू नो सम टाइम विल कम जब आपको इसका फायदा होगा डेफिनेटली। कोई अच्छा काम वेस्ट नहीं होता। सिर्फ इसमें चैलेंज यही ऐड हो रहा है कि कोई इसमें एथिकल डिलेमा नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ रही है, दो डिफरेंट एंगल से एक ही डेटा को देखना पड़ रहा है। जैसा कि आपके मैनेजर ने भी अप्रूव कर दिया, ये नहीं कहा कि आपने गलत स्टेटमेंट या गलत रिपोर्ट बनाई है, सिर्फ उनके डिसएग्रीमेंट्स थे। सो ये बिल्कुल नेचुरल है। जिस तरह अभी एक इंडिविजुअल थे, आप में से कॉलीग थे हमारे, जिनका एक डिसएग्रीमेंट था, सो ये ब्यूटी है। हमेशा कभी भी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे सब लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, ये एक डाइवर्स वर्ल्ड है। सो हो सकता है कि मैनेजर को ये लगता हो कि ये जो जिम्मेदारी है ये अब आपकी है, सो आप हैप्पीली वो जिम्मेदारी कबूल करें, और फिर उसमें आपका जो कंपास है वो कंपास ये प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपने कुछ अनएथिकल नहीं किया, यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड करेजियस टू स्टैंड कि जी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूँ, ये जो मैं प्रोड्यूस मैंने किया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल एंड द टेक्निकल नॉलेज दैट आई नो ऑफ। So, इसलिए this the only challenges it presents is the extra amount of time and effort that you have to spend. चलें जी, ठीक है। आई थिंक लेट्स कंक्लूड एट दिस। आई थिंक विद द थॉट कि आप लोग अपनी यू मोस्ट वेलकम, आप लोग जो अपनी स्टोरी है अबाउट योर एथिकल डिलेमा उसके ऊपर क्विकली काम करेंगे एंड देन सेंड इट टू अस। हसन कब तक भेज दें?
can you give them a Well, time? take your Can time. आप they मुझे send it भेज before दें. the next session, as in before Yeah, Wednesday, send it to me. before the session on Yes, Wednesday, right? by the end. Yeah. ठीक है. So आप लोग कोशिश करें कि हमें कल तक मिल जाए कुछ stories about yourself. Otherwise परसों before the session, and the session starts at 7, so let's keep it at 6 o'clock. परसों 6 o'clock तक आप प्लीज अपनी स्टोरीज जो है वो शेयर कर दें, हम इनको सेशन में कुछ को डिस्कस करेंगे. प्लीज कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर कीजिएगा. इसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना, किसी इंडिविजुअल का नाम लेना इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि आपने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये मैंने इनका टेस्ट रखा हुआ था. I'm so sorry. Cat out of the bag. चलिए ठीक है. No issue. तो ये एक आपको हिंट बन गई है एक्चुअली. All right. चलिए, all right जी. Okay, thank you very much and have a very good evening. Thank you very much and Allah. Yeah. Thank you everyone. Thank you Harun sahab. Take care. Thank you everyone. Khuda Hafiz.